Hello everyone, good evening. A very warm welcome to everyone in attendance. This will be an evening where we will be privy to insights into India's growth story, the strides it has made so far, and the leaps it will soon make. It is an evening where we'll reflect and project. Welcome to the first edition of InSight, a mega conclave that will bring together industry stalwarts and leaders from sectors that are instrumental in charting the course of India's Amrit Kal as India writes its growth story, becoming a preferred partner of choice for global powers. Absolutely, and from recap to roadmap, this is an evening where we'll all navigate through the past and chart the future with insightful discussions with our esteemed guests, moderated by the dynamic duo of the most respected journalist in the country. Well, this is truly a unique event. Also because for the first time, WION and Zee Business are coming together to bring you this mega conclave. Welcome to InSight, a mega conclave where we keep India's growth in our sight. And of course, it's co-presented by SBI Mutual Fund, co-powered by MRF. Real estate partner, Signature Global, banking partner, Canara Bank. And if you're posting anything on social media, don't forget to use the hashtag InSight2024. In fact, we have an audio visual which will give you an insight into what we are going to present to you in the evening. Can we have the AV, please? अब हम हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। भारत है डिजिटल पेमेंट्स को सबसे तेजी से अपनाने वाला देश और 5G रोलआउट में दुनिया में सबसे आगे। The G20 presidency has delivered several crucial outcomes for IT and the manufacturing sector. बढ़ते हाईवेज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शहरों में बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ। Despite recent global economic challenges, India's economy has shown resilience, adaptability and growth. आइए और देखिए बढ़ते हुए देश के साथ कॉर्पोरेट इंडिया के दुनिया भर पे छा जाने की कहानी। Join us as we take stock of all the transformation taking place in India and decipher what the days ahead hold in store for India Inc. The future is in sight. भविष्य हमारा है। शिवन, बहुत ही शानदार इवनिंग होने वाली है और पहली बार हम एक मेगा कॉन्क्लेव लेकर आए हैं इन कोलैबोरेशन विद जी बिजनेस एंड WION। मैं पहले आशीष को बोल रहा था the hall will be full right till the back and that's exactly what's happened. Before we start and before we go any further, may we please request Mr. Madhu Soman to come on stage, Chief Business Officer, WION and Zee Business. Sir, please share a few words with us. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for taking our time in the middle of a very busy week and joining us as we present the future of India with insights from the past and an insight into the future with WION and Zee Business. Now, my problem is, does anybody here know how to use ChatGPT or OpenAI? I looked for a speech, actually, I couldn't. So if I fumble through this thing, I'm pretty sure Anil and Vikram will make up for all my faults and deficiencies with their wonderful ways, because I truly believe that they are the best in broadcast in India. And I, as a former journalist, I'm always looking for answers. So there are questions that I would like to ask, which I believe Anil and Vikram will definitely be asking. The thing is, I was reading up somewhere, and everybody says India is the future. People are looking at India. People back through the 80s and 90s, India's biggest challenge was dehyphenating India from the Pakistan factor. Now India is called the China plus one. I think India will have a standing of its own, and we will soon outgrow the China plus one factor as well. But that will require a lot of
investment of mind and money to make things work across sectors. And again, Mark Moby has said in May that the best thing about India is you take any sector, there is a market there. 1/3 of India's 1.4 billion population is in the working age. So the challenge there is to find the right and adequate infrastructure to support their movement, to find the right kind of skill development platforms for them to kind of aspire for bigger and better things, and hopefully spend it in our own country, because the one bright spot and spark for India all throughout has been our domestic consumption story. And then the domestic consumption story is very clearly now driven by nothing but the digital commerce that has exploded upon us. I have a mother at home who is 79 years old. I'm always worried as to when she will click on something and all her banking transactions will be available to somebody sitting somewhere in some part of Europe. But despite that, after coming back to India a year and a half ago, I'm actually gobsmacked by the number of stuff that I myself am buying online. The shopping online is very high. Then I was looking up for some numbers. The number of women over the age of 40 and the Gen Z in India, which is those who are born after 1994, the kind of spending that they are doing online is what is driving the e-commerce industry in India. But adequate steps and safeguards should be in place so that what is exploding doesn't end up exploding on our face as well. So those are the questions that I would like you guys to discuss, ponder, to ensure that we have a stable, sustainable, and scalable economic story. And we at WION-Zee Business would like to be an equal partner in that journey. And welcome to the evening, and thank you again for taking our time. Sorry for the slight delay. There's a bit of a gridlock in Noida, but we hope to overcome that and get on with the show, because the show must go on. Thank you so much. Thank you, sir. अब हमारे इवनिंग के पहले सेशन की बारी है। साल 2023 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कई कीर्तिमान बनाए। रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट से लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स के बढ़ते पार्टिसिपेशन और एसआईपी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स तक हमने देखे। 2024 के पहले ही महीने में जनवरी में 18,000 करोड़ के पार एसआईपी के नंबर्स जाते देखे। तो ये रिटेल जो कि तीसरी महाशक्ति है उसकी ताकत दर्शाता है। Now, we'll focus on aspects that will shape investment trends in the future and what should be the mantra to stay on as a long-term investor in the markets. And with that, let's move on to our first session for the evening, Changing Investment Trends and the Future Ahead. And this session will be moderated by our very own Mr. Vikram Chandra. And for this session, we would request Mr. DP Singh, Deputy Managing Director and Joint CEO, SBI Mutual Fund, to please come on the stage. So please come on the stage. With a huge round of applause, let's welcome our guest on the stage. All yours, sir, please. Thank you both. Thank you both so much, and it's a pleasure to be here, and it's great to have you with us, Mr. Singh. You know, we are here to reflect on the past and project on what is going to happen in the future. And as we were just hearing, the question of what retail investors are doing is a really important question. Because if you look at the financial markets in the past, it quite often used to happen that retail investors would come in at the very peak. When the bull market is about to come, they would have suddenly come inside, they were taking tips, and then the markets would crash and they would lose their money, and then the cycle would be repeated. Now it seems very different. We're hearing SIPs, we're hearing mutual funds, we're hearing retail investors putting their money into the market from the point of view of long-term investment, planning for their retirement, planning for weddings, planning for the future. Is that what you're seeing? Is it different this time? Yeah, it is. First of all, thank you very much for having me with such a wonderful audience, and always very happy to be with WION and Zee Business. Mr. Anil is there. So sometimes we see only the rosy picture, but some things we miss out. The thing is, yes, people are behaving in a very, very matured manner, but at the same time, this maturity is also becoming a pain for us for the simple reason, because people have been saying that market is at peak for the last 2 years.
So they have not been able to participate in the market with the numbers that they could have been. They have lost out on this thing. Yeah, of course, it's not that Indians have not made money, others have made money. But I think some exuberant, some more aggression is required for India, because we are really in a very sweet spot. When we talk about the SIP numbers like 18,000 crores, very good numbers. But when we look at the net numbers which are coming into the market, 18,000 crore multiplied by 10 as of now, we should have been in mutual fund industry 1,80,000 crore plus lump sum money. But the actual numbers are less than that. So that's an issue. But yes, there's a shift. The matured people, they are the older people, they are booking profits also, but the youngsters are coming in a big way. That's a very big theme which is going to happen. And I think this 18,000 crore will become 25,000 crore very soon. And we will see that people come into the markets in a big way. Would it be correct to say that for a first time, it's inflows from within the country? For a long time, again, if we reflect on the past to project for the future, in the past it used to be happen that Indian stock markets would depend on what the FIIs are doing. When the foreigners are coming, putting money in, markets will rise. When the foreigners are pulling money out, the markets would fall. Now the markets seem to be rising on the strength of domestic money, Indian money, and increasingly retail money. Do you think that's a trend that is now there to be seen? No, that is definitely a trend, because there are structural changes. We are getting almost $2 billion kind of net flow in the markets. I'm not talking only about mutual funds. If you look at the EPFO putting every month almost $300 to $400 million, almost 3,000 to 4,000 crore rupees into the markets. The other insurance company, the other provident funds, because every provident fund is putting in 15%. And with the incomes rising, that 50% money is also rising. Plus the mutual fund flows. I think with the kind of depth we have, with the kind of market capitalization we have, so this kind of money is a very healthy money. But at the same time, with the new corporates coming, every day we see 2-3 IPOs coming, the breadth of the listed companies will grow and more people will come. I think next decade belongs to India in the capital markets of the world. So coming back to changing behaviors and changing patterns, in the past, how did Indians save? Through all of history, bhai gold khareed lo. Or agar gold nahi khareedna hai, then take the cash and put it under your mattress. Yeah. Now after demonetization, hopefully fewer people are taking cash and putting it under the mattress. It's a risky thing. Maybe they'd buy real estate. At a pinch, they'd say fixed deposits. Financial assets lena chahiye, so we'll go into some fixed deposits. Yeah. Is that changing now? That the real returns are in equity, long-term capital and wealth can be made from equity. So let's put 10, 15, 20, 30, 40% of our money into equity. You know, that definitely is a trend. You talk to anyone in India, anybody who is having some surplus money, they are definitely either doing SIPs or putting some money in the markets. If you look at the data also, 6 years ago, mutual fund AUMs were 10% of the total bank deposits. Today it has become almost 25% of the bank deposits. So that's something which is very big trend. Today when the total deposits of banking industry are 200 lakh crores plus, the mutual fund itself is around 51 lakh crores, which is 25%. So that itself, the data itself shows that more and more people are coming into the mutual funds, more and more people are coming into the equity markets. Of course, talking about the new number of DMATs which are coming in a big way. So that's another story. We should see only the good part of it, because DMATs are sometimes open in a way which are highly inactive. We should actually look at the active DMATs and how people are putting in money. And the only worrisome part is the youngsters who have been putting money in the equities. They have seen only one side of, whosoever has started putting money for last 4 or 5 years, they have seen only one side of the market. They have not seen corrections, etc. And sometimes they are using equity markets as savings bank account also. Keep on putting SIPs, keep on putting money in SIPs, and whenever you need it, you draw the money. So then they don't get the benefit of averaging. So today, on the one side, we are saying that it's a very good, we are in sweet spot. And on the other side, the people like you, people like WION have to do a lot of education. We as the manufacturers and media, we all have the responsibility to
teach people how to invest, how to remain disciplined. But overall, things are very, very good. So let's take that point which you were just referring to, the task of education. Yes. Because as people start to shift their money from FDs to putting the money into equity, they need to realize that, as you were just now saying, it's a different thing, it's a different beast. You shouldn't be trading. You have to be prepared for the fact that there will be down years. There will be times when it'll go up 40%, but there will be times when will go down 30%. Yeah. So if you need money definitely in 2025 for your daughter's wedding or your son's wedding, then maybe you should have a certain percentage and something else. Absolutely. What is the advice you would give to small investors particularly at a time when the markets are already close to an all-time high? What is the advice you would give them? No, my appeal to these investors will be continue putting money in a disciplined manner through SIP mode, but link every SIP to an objective. And then don't leave the objective, don't get into it, don't dip into it whenever you need money. That is some trend which is not good, and that's what we have to tell people. Remain disciplined, remain there for whatever period you have thought while starting the money, and step up your SIP amount. This is another mistake people generally do when they start with 10,000, 20,000, 50,000. With the increase, with the wealth increasing every year, with these incomes increasing every year, they don't step up the amount of investments. So what happens? The value of money keeps on coming down. So that's another thing. But I'm telling you, I mean, more and more people are getting educated. There's a number which is showing that the number of step-up SIPs are increasing. But again, educating, at the time when markets are doing very well, it's very necessary. There are so many people not only talking about the sweet spot, not only talking about everything good is happening. For that, our Prime Minister is good enough. He tells us everything. I listen to his speech every day. I don't need to read anything else because he is something, if you look at yesterday's speech, he has covered almost all the things which we have been talking in every conference, whatever platform is there. But thing is, keeping very close grip on the investors so that they don't burn their fingers in a big way whenever there is a correction happening. I feel that is the maturity, that is the responsibility which we all have to be, and we have to actually think about the future trends. Today we are talking everybody about energy, about green energy. These are the trends. And this is the same way as we were talking about IT, we were talking about financial sector. Now it's the time of energy and green revolution and see all those things. So we need to, in the manufacturing side, we need to look at it, how we get people's money into these sectors so that they get more and more. That's presumably the reason you've just launched an energy fund, right? Yeah. No, that was absolutely coincidental. We had a lot of research. We worked for 3-4 months. And honestly speaking, it was absolutely incidental that we launched the fund, and the same day energy week was launched on the same day. But we have seen lot of interest. I mean, please forgive me. Don't take it as a sales pitch or something why I'm talking about. But there are some stories which teach you so many things. Yesterday there was one NRI who came from USA, and he wanted to put some a big money, double-digit crore of rupees in this NFO. So our relationship manager was telling, sir, it's don't put together. We can do 50% now, 50% later. We'll do the systematic transfer. And this is the first day, you will put the last day because today is the first day. It will be better if you put on the last day. But I was saying, look, I have come from USA. I have seen what self-sufficiency of energy can do to the country. I'm very gung-ho about India. And I want to put in money today on the first day itself. And he forced our people to get the application on that day. That's the kind of confidence. But we sometimes we have been taught 60+%, don't give him too much equity, don't give him this, don't give. But today we are having, when 80 years person comes and say, put my money into an aggressive fund because this money doesn't belong to me. This is next generation money. Let me create wealth for my next money. So definitions are changing. These stories are coming in a big way. People are coming with, and especially the NRIs. They are much more
confident about India than the Indian itself. So, that's the question sometimes when I'm sure you're asked this question all the time, when you go out, you meet people in the public, they're quite often saying, we believe that we should be investing in equity, but have we missed the bus? 2020, if you think about it, at the time of the crash, where was the Sensex? It's up now. Sensex is 71,000, Nifty is 21,000. Have we missed most of it? Now, maybe there'll be corrections, but is the answer to that, if the Indian economy is going to grow at 6-7%, and if then you add inflation to that, corporate earnings are going to go to 12%, 13%. So whichever way you look at it, you could maybe get it wrong in some stocks, but overall, you should get 12 to 15% returns for the next 5 years, 7 years, which means you'll double your money within 7 years. Definitely. I'm 100% sure that, people have to bring down their aspirations, because once they look at 30, 40, 50% return in 1 year, they feel that this is the market which will keep on giving this kind of returns. The aspiration should be good double-digit returns. What you are saying is 12 to 15% is the best expectation one should have. That is number one. And number two, the number is a number, whether it is 21,000 or 22,000. There's a huge opportunity still available. If we talk about the energy sector itself, this is at 25% discount to the overall market. So there will always be opportunities. You look at what is happening to public sector space during the last 2-3 months. Because look at the public sector banks, how they are behaving today. Reason being, there's a catch-up story. There are always stocks which are available at good value. And especially the mutual funds, they do a lot of research. They have very strong research teams, and they keep on getting the good value to the investors. That's my point. A couple of other, before we go, the sort of structural changes that they are having, that are happening around us. There are a lot of people, for example, who are starting to question PMS schemes and AIF schemes, because they are there, but quite often you're paying higher fees, 220, you're locking in your money for a long period of time. And there's a certain view which is coming, not just in India, but around the world, that maybe simple, plain vanilla mutual funds or plain vanilla ETFs as you have abroad are a better and a more right way to go, because it's lower fees and liquid, easier to cash out. Why do you need to pay those extra fees? As I was listening to Madhusudan, you take about any sector, there's a market in India. The same is true for the capital markets also, the mutual funds also. There's a big niche of people who have yet to start their investing journey. For them, the plain vanilla, low-cost products are very good to start the journey. But there are people who are having a very high risk appetite, and they are ready to pay higher fee but take higher risks also, which is less regulated, but you can take risks. So there's enough money to be made in AIF, there's enough money to be made in PMSs. You can't have one rule for everybody. If my net worth is, say, 20 crores, my investable is 20 crores, why can't I have 5 crores in a high risky fund where I am likely to get good returns? And there are instances where people have shown, but just having PMS or just having AIF for the heck of it is not right. Sometimes people have this tendency also. The mutual funds is a fellow class also, mutual fund. Why should I? Because मैं तो white collar हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं क्यों लूँ इसमें mutual fund में? That is not correct. But at the same time, PMS, AIF, there's a big market, and AIFs, we can do so many things. Now, in private equity, there's so much space. In the simple products, we can go only into the listed space. But there's so much money to be made in the private equity side. There's so much money to be made in other areas. So I don't think it's right to say that the simple products are okay. We should not have PMS, AIF. We have enough market for all the products. All right, sir. Then one last question to ask you. If you had to look ahead to 2030 and people watching this here and on air, what would be your projection? What sort of a market cap, what sort of a Sensex, Nifty should they be looking at, let's say, in 2030? And the corollary to that, what percentage of their money should be in equity? Second question first, what percentage of the money depends upon individual. Every individual is a different organization. So if you ask me today, when I'm at this stage of life, my 100% is into equities. Because once you are done with your house, your normal deals, you are having sufficient cash inflows which are visible for next 5-10 years, I don't think anybody should not be in equities.
But at the same time, if a general rule you ask me, I think minimum 15 to 20% of everybody should be in equities. That is for sure. And the second part, the 2030, I'm sure this will give the definitely good double-digit return. People at CAGR 15 to 20% will come. But this Nifty 50 will not be Nifty 50. This will be maybe 100 or 200 stocks Sensex. But the names of the companies will be totally different. The new businesses which are coming, the businesses which will grow, maybe if you look at last 15 years also, so many companies which were there, 60, 70% companies are not there in this Sensex now. So the new businesses are coming, new themes are coming. And today, when we are launching a new thought kind of schemes, the idea is that only, to get into the tomorrow's futuristic sectors much in advance so that we can create alpha, we can create good value for the investors. All right, that's a great vision to look forward to. Ladies and gentlemen, Mr. DP Singh, please put your hands together. Thank you. Thank you so much. Lovely talking. Thank you, Mr. DP Singh. Thank you, Mr. Vikram Chandra, for this very informative session on changing investment trends and future ahead. Next up, we have a keynote by Mr. Navneet Munot, MD and CEO, HDFC Asset Management Company. Let's listen to his views on how policy reforms have transformed the Indian economy. Whenever I ask people about the biggest reform that has happened in India in the last 10 years, they normally talk about GST and other taxation reforms. They talk about digitalization. They talk about IBC or the other financial sector reform. People talk about RERA. People talk about what we have done on indigenization of defense manufacturing or the big push to manufacturing in the form of PLI, so on and so forth. But to me, I think one of the biggest reform that has been undertaken in India in last 10 years is a very high quality social security net, a very high quality, delivered in a very different manner than most of the other countries. At $2,500 per capita, there aren't many countries in human history which have created a social security like this. I call this India's UBI movement. UBI is Universal Basic Income, but this is not the UBI as we all know. We're crediting money in every account. This is very different. What is India's UBI? India's UBI is a free toilet, a free LPG cylinder. It's a free, a basic electricity. It's a maybe one LED bulb. It's Ayushman Bharat. It's a PM Kisan. It's PM Awas Yojana. It's Sukanya Samriddhi. I can go on, and maybe tap water. Some of these things, I think, and of course, 800 million people with basic food. This is very unique, and with the help of Jan Dhan Yojana, Aadhaar and mobile phone, with these three, the way they are getting delivered to the last mile is something very, very unique. And I think it will be a case study for several countries and several societies for next several decades, if not centuries, how India created such a wonderful social security net, well delivered at such a low per capita GDP in such a vast and complex geography. I think some of these things make me feel that over the next several years, India's growth journey will be so unique and will be so powerful. One of the interesting thing about making the growth more equitable or inclusive is also the role played by the capital markets. Now, if we compare India's growth with China's growth, these two have been a very, very distinct model. From 2003 till now, China may have done exceptionally well when we look at the economic growth or the size of the GDP or per capita GDP versus when we look at India. But the difference is in 2003, Sensex was 3,000. And now it's 72,000. It's almost 25 times. While in China, the Shanghai index or the stock market index has hardly moved. It maybe doubled in last 20 years or so. So high GDP growth could not be converted into high corporate profits, which could not be delivered as the returns in terms of market capitalization or the stock market return. If we look at India, thanks to the capital market infrastructure, outstanding regulator with a beautiful capital market infrastructure, what we have been able to do is a consistent high GDP growth,
converted into corporate profits, which the corporate or a private sector or the entrepreneurs could leverage on the economic growth of the country, and a stock market which could convert that growth into the returns that can be delivered to minority shareholders, and a mutual fund industry which is so well regulated and well managed and deeply publicly scrutinized that even with a 500 rupee per month SIP, those returns could be delivered to any investor. And this is very, very unique, and this is a distinction between, let's say, China's growth story versus India's growth story. We have seen how mutual funds have grown over the last several years. I think our mutual fund industry grew by 10 lakh crores. We touched an AUM of 50 lakh crores. And just to put that number in perspective, the 10 lakh crore growth of last year was same as the total size of the mutual fund industry in 2014. So we have grown in 1 year what was the total size of the industry 10 years back. And over the next several years, I feel very positive about the opportunity that millions of Indians will have to participate in India's growth story in this Amrit Kal. The reason why SIPs have grown so much over the last couple of years is fourfold, and in 2 minutes I will try to explain. Number one is the track record of the industry. Now we have several funds which have a track record of 15, 20, 25, in fact going back 30 years of delivering outstanding returns, superior returns. And then people have got faith that markets may go up and go down in the short run, but over a period of time, you make money through the mutual funds. Number two is the transparency. This is one of the most transparent product in financial services, not only in India, but even globally. The third is the technology. I think the government's intense focus on digitalization has also helped in financialization of savings. And the fourth, last but not the least, is the intense focus on, just to create an acronym, track record, transparency, technology, and I'm saying training, but by training I mean investor education. The campaign of mutual fund Sahi Hai, under the guidance of our regulator and an initiative of all the industry players, has done wonders in terms of sending the message to each and every household in India. But we have a long way to go. It's still all said and done. There are little over 4 crore investors in India, but over the next several years, as we become a developed country, as we grow to a $25-30 trillion economy, the real joy for all of us in capital markets, for all of us in mutual fund industry will be that fruits of this growth is shared or is distributed to every household in the country. And I think our industry will not leave any stone unturned to make that happen. Once again, thank you so much. And I repeat the same sentence that I said in the beginning, that I strongly believe that in this Amrit Kal, over the next 25 years, India is likely to create an economic miracle, which is absolutely unparalleled in human history. And I strongly believe that this is India's century. Thank you so much. God bless you. Beautifully summed up. This is India's century, and it will be for sure. Aage बढ़ते हैं अभी. In the next session, it's now time for our leader talk. Our focus will be on infra as the backbone, transmission and distribution challenges, smart solutions for grid modernization, and regulatory framework and policy reforms. Of course, to take this discussion forward, we'd like to call our very own Vikram, Chandra and Anil Singhvi on stage to take the discussion forward. And of course, our guests. Let's welcome our esteemed guests for this session. And this is our leader talk. And as we just mentioned, our focus will be on infra, transmission and distribution, and the challenges we are facing at the moment, the solution, the smart solutions for grid modernization, and what can be the regulatory framework and policy reforms. Let's welcome our esteemed guests for this session. Please, Mr. Vikram Chandra and Mr. Anil Singhvi, please come on the stage. And Mr. Anil Gupta, CMD, KEI Industries. Please welcome Mr. Pradeep Gupta, co-founder, Indian Angel Network and chairman, Cyber Media Group. And Mr. Pradeep Agrawal, founder and chairman, Signature Global India. Yes. Whatever you prefer. Over to you, sir.
Good evening, friends. Leaders talk. हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो दुनिया में 5वें नंबर की हो चुकी है, टारगेट हमारा 30वें नंबर पहुंचने का है। और जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको फ्यूचर के लीडर्स तैयार करने हैं। और फ्यूचर के लीडर्स वो होंगे जिन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो आगे चल के भविष्य में उनको एक बड़ा लीडर बना सकता है। और आज इस पैनल पर हम इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ पैनल में सारे जो पैनलिस्ट हैं उनका अपना अलग अलग फील्ड का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। कई इंडस्ट्रीज़ के एमडी गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, मैं 10 साल पहले जब आपका इंटरव्यू किया करता था तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता था आपसे, कितने ऑर्डर्स हैं आपके पास, कितने समय की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, बिजनेस करने के लिए साल 2 साल का काम आपके पास है ना। अब मेरा सवाल बदल गया है, आपके पास काम तो बहुत है, एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी है कि नहीं, कब तक पूरा कर लेंगे, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, क्या कुछ बदला है ऐसा पिछले 5 या 10 सालों में कि हम ऑर्डर से एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। धन्यवाद अनिल जी। आपने पूछा कि पिछले 10 साल में क्या बदला है। स्केल बदल गया है पूरा। अगर हम 10 साल पहले 100 की सोचते थे तो आज 1000 पे तो पहुंच गए हैं, बट 1000 क्या 2000 पे पहुंच गए हैं। बट मुझे लगता है कि आज अगर हमारे अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, तो और 5 गुना कर सकते हैं। अच्छा, इसका कारण है, एक तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है, हर आइटम की कंजम्पशन बढ़ी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इतना ज़बरदस्त हुआ है, रोड्स में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स, रेलवेज़, हाईवेज़, कि हर इंडस्ट्री को इसमें काम मिला है। सीमेंट, स्टील, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल, एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स इट हैज़ जनरेटेड। दूसरा, जो इंडिया की इमेज दूसरे देशों में, डेवलप्ड मुल्कों में जो बनी है, उससे अब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। और दुनिया की मार्केट बहुत बड़ी है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, अमेरिका, यूरोप, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ा है। तो वो अब डिपेंडेंट हैं अपनी आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया पर, चाइना पर। तो अब चाइना +1 की बात हो रही है, तो इंडिया बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। इसका कारण ये भी है कि हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत मजबूत हुए हैं। और उसका बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्री को या इंडिया की व्यापार को मिल रहा है। तो एक तो देश में बहुत अच्छी डिमांड आई है जी, और दूसरा विदेशों से इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छी डिमांड जनरेट हो रही है। और जो उसको उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड से या उनके प्रोसीजर से उसको टैप कर सकता है, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए या उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। Pradeep Gupta, if I could turn to you next. You were talking about, the question that used to be asked maybe 15 or 20 years ago. I remember having conversations with you also 20, 25 years ago. And we were talking about the fact that there will be a digital India. Digitization will be important. The internet will spread. Computers will spread. All of this will happen. Technology will become one of the hallmarks of a rising India. Now, there's no doubt that that's happening, and in many areas we are ahead of the pack. How do you think this is going to be, again, if you're reflecting on the past but projecting, so when you're projecting this trend in the next 5 years, 10 years, 15 years, what do you see happening? And how do you see this particular strength being also taken to areas like deep tech? Yeah. So indeed, we have made tremendous progress in the past 20 years. But you have different kind of waves that come in information technology, the ICT industry, which change the entire game. Okay. And I think, every 5 to 10 years, a new wave comes.
So I think let's look at what those new waves would be. And the new wave is all going to be built around deep tech. So if you see, once again, the past, let's say, 10, 15 years, most of the changes have come because of decentralization of whether it is devices in terms of mobile, in terms of communication, which is in cloud, if in terms of software, which is SaaS, and so on. What is going to be the next wave? That is all going to be driven by, we can see right now what is happening in AI, ML. But you know, whether it is robotics, whether it is natural language, whether it is human computer interface, whether it is in terms of advanced material sciences, photonics, quantum computing, and each and every business, as we know, will undergo a change. So say the cable business will change because you'll have smart cables, right? You will have completely different kind of ways in which things will happen. There'll be new materials that will come in. Similarly, the real estate business also will undergo a complete change. You know, it's already happening, 3D printing and so on. And therefore, you know, to just like to touch upon one specific point, it is expected that deep tech will have 10 to 15% impact on the economy. All right? Therefore, if you're talking about $100 trillion economy, and 15% of that would mean a $15 trillion economy, that will be, even if you look at India, you know, at whatever 8 to 10, that is our target, and if I was to convert that, we are talking of $1.5 trillion, half of what we are being driven by deep tech. Okay. Now that's a massive, massive shift which is round the corner. And I think we need to make very significant investments. And you know, we've talked about China, but very quickly, China is making tremendous amount of investments there. So we must watch out what they're doing in the area of deep tech and be concerned about. You know, sometimes when the wave is actually there and people say it's going to transform everything and look at AI and AI is going to be everywhere and it's going to transform things, sometimes there's too much hype. Sometimes there's more hype than actual fact. In this case, are you sure that the deep tech changes that we are seeing are genuine, or is there an element of hype in it? Absolutely. There is always this hype which is there in any kind of technological changes that take place. But you know, then the dust settles down. But at the very core, you find that there are fundamental changes that happen. You know, the way, take any business, take a travel agency business. You know, what was it 40 years back? What is it 20 years back? What is it today? It's completely transformed itself, right? And there will be such fundamental shifts which will happen here as well. We need to work on capacity building. We need to ensure that people are trained. We have a tremendous shortage of almost about, you know, there was a NASSCOM report which talked about huge amount of shortage as far as skills are concerned in this deep tech area and so on. I think we really need to gear up that engine. Absolutely. प्रदीप अग्रवाल साहब, लीडर टॉक की बात हम कर रहे हैं. जनरली आप जिस फील्ड में आप मिड साइज घर बनाते हैं, अफोर्डेबल घर बनाते हैं, बिल्डर्स के बारे में ये माना जाता है कि एक सर्टेन तरीके से वो काम करते हैं जिसकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, राइट? आपने इस फील्ड में मेरे ख्याल से एनसीआर एरिया में शायद मुश्किल से 2 या 3 4 बिल्डर्स ऐसे होंगे, डेवलपर्स ऐसे होंगे जिन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर लाने की कोशिश की, और आप ज़्यादा पुराने नहीं, मेरे ख्याल से इस बिजनेस में 10-12 साल पुराने, राइट? क्या फ़ायदे हैं एक अनरेगुलेटेड और बिना कॉर्पोरेट कल्चर वाले बिजनेस से कॉर्पोरेट कल्चर वाले बिजनेस में शिफ्ट होने से, और इससे कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में लीडरशिप ला सकते हैं, ये आप अपना एक्सपीरियंस बताइए. थैंक्स अनिल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा. देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ है उसका ट्रस्ट. मुझे रियल एस्टेट में आने के बाद ये समझ में आया कि रियल एस्टेट में एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी, उसका नाम है ट्रस्ट. जो हार्ड एंड मनी है, जो ईएमआई के रूप में हर महीने आपको ट्रस्ट करके वो कस्टमर पे कर रहा है इस होप पर कि एक दिन उसे अपना घर मिल जाएगा जी. वो किसी ना किसी रीज़न से, शायद डेवलपर की कुछ होंगी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उसकी वजह से या कुछ मिस प्लानिंग की वजह से
कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो डेवलप नहीं हो पाई सोसाइटीज़। उसने तो ज़िंदगी में पहली बार घर खरीदा था, और पहली बार घर खरीदा और पहली बार ही चोट लग गई, तो उसने पूरी इंडस्ट्री को ही खराब मान लिया। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है सभी लोग खराब हैं, कभी भी कोई इंडस्ट्री में सभी लोग खराब नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मुझे लगता है पिछला जो डिकेड रहा उसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, और मैंने आने के बाद ये समझा कि आप ईमानदारी से काम करें, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपने कस्टमर को अवेयरनेस दें, और जो कमिटमेंट उसके साथ कर रहे हैं वो कमिटमेंट पे पूरा खरा उतरे हैं, वो आपको सराखों पे बिठाता है, आपके प्राइस पे वो लेने को तैयार होता है। एंड कितना, यानी आप जैसे वॉल्यूम की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अभी बहुत हम अंडर एस्टिमेट हैं। अभी एक चाइना का बहुत जिक्र हो रहा है, तो चाइना में काफ़ी मंदी आ गई हाउसिंग के अंदर, तो हाउसिंग में मंदी आने के बाद उसकी जो ईयर की प्रोडक्शन है घरों की, वो आज भी 30% मंदी आने के बाद भी 65 लाख है। हमारा देश 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, और यहाँ आज की एनुअल प्रोडक्शन 7 लाख है। कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे छूट रहा है, और वो चीज़ इस बार के जो बजट में मुझे दिखाई दी। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी का एक ही सेंटेंस था कि विकसित भारत। 2047 में अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो 25 साल में, इसका मतलब सभी लोगों के पास घर होंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा, हर घर में जल और बिजली होगी। तो इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? रियल एस्टेट का, पूरी हर इंडस्ट्री को। यानी ये कोई एक इंडस्ट्री की बात नहीं, चाहिए केबल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, उस हर इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आज भी बहुत मौके हैं, बहुत अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी केवल, क्योंकि कोविड के बाद जैसे अनलॉक होने के बाद लोगों ने अपने घरों की अहमियत को समझा है। पहले मैं देखता था कि, क्योंकि आप शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा लोगों को एनालिसिस करके बताते हैं, यील्ड के बेसिस पे काम करते थे कि रियल एस्टेट में जो रेजी की यील्ड है वो 2 से 3% आती है। राइट। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट किसी और जगह लगाकर रेंटल घरों में रहना प्रेफर करते थे। लेकिन कोविड ने पहली बार लोगों को ये समझाया कि छोटा या बड़ा कैसा भी हो, एक अपना घर जरूर होना चाहिए। बस यहीं से पूरा गेम चेंज हुआ। आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में जो रियल एस्टेट ने जितना बूम लिया है, मुझे लगता है अभी वो केवल स्टार्ट है। आने वाले 5 से 7 साल बहुत बड़ा गेम चेंज होगा। लेकिन ऐसा बदला क्या है? क्योंकि देखिए मेरे पिताजी ने सबसे पहले जब उन्होंने घर बनाया, उनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी थी। मैंने 35 साल की उम्र में घर खरीदा, पहला मेरा फ्लैट जब खरीदा। मेरे बच्चे आज पहला पढ़ाई करते ही, जॉब शुरुआत करते ही उनको घर चाहिए और गाड़ी चाहिए। आप अफोर्डेबल हाउसिंग में हैं, ऐसा क्या हो गया है कि हिंदुस्तान का यूथ अब ये सब कुछ अफोर्ड कर पा रहा है? देखिए एक थोड़ा सा क्या चेंज आया, मैं यानी 2014-15 की बात कर रहा हूँ। एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। दूसरा, रेगुलेटर का आना रियल एस्टेट को बहुत चेंज कर गया है। ओके। 2017 में रेरा आने के बाद पहली बार कस्टमर को लगा कि डेवलपर ऐसे छूट नहीं सकता, एंड डेवलपर भी सीरियस हुए कि अब स्टेक दाव पर है। अगर अब नहीं डिलीवर किया तो अब जो उसके कहीं ना कहीं जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़े होंगे। और पहले दिन से रेगुलेट हुआ। आप ये देखिए अनुशासन किस चीज़ का है। 100 रुपये अकाउंट में आते हैं, 30 ही रुपये डेवलपर के पास फ्री हैं, 70 रुपये कंस्ट्रक्शन अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट चले जाते हैं। Correct. तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो उससे कंस्ट्रक्ट करिए या आप बैंक में रखिए। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो करेगा। ये अनुशासन हो गया। आज मार्जिन आप देखते हैं तो शाम को 5 बजे मार्जिन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो आप ना उसका पैसा यूज़ कर सकते, ना आप अपने पास रख सकते, टाइम से वापस करना पड़ेगा। तो आपकी मार्केट में आप ये देखिए पहले कितने ज़्यादा मार्केट अप एंड डाउन होते थे। पिछले 15 साल में एक भी किसी टाइप का कोई स्कैम आपको बाज़ार में दिखाई दिया? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट रेरा आने के बाद बहुत चेंज हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, रेरा आने के बाद जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें से 90% डिलीवर हुए। अच्छा। पिछले 2017 के बाद जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें से 2023 तक लगभग 86% प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया है, लोगों का ट्रस्ट आया कि अब रियल एस्टेट बदल गया है।
अब वैसे डेवलपर्स नहीं हैं। शायद अब हमें घर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है यही चीज़ें हमने पूरी एज ए सिग्नेचर ग्लोबल हमने इस चीज़ों को समझा कि जितनी आप ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, क्वालिटी डिलीवर करेंगे, तो लोग आपको ऑफ कोर्स पसंद करने वाले हैं। Mr. Gupta, if I could turn to you, looking at the opportunities now that lie ahead, one is just some of these opportunities. As real estate proceeds, construction happens, infrastructure boom, you will have more than enough to do just from that. But also what he was saying about deep tech, about new technologies coming, there'll be new forms of electricity, that will be new forms of energy that will be delivered. There could be electric grids being connecting India with the Middle East. That conversation is on. Cables will be required for that. What is it that excites you the most? The traditional or some of the new things that are happening? Or both? Both. देखिए, अगर इकोनॉमी को बढ़ना है और हर एक को प्रॉस्पर करना है, तो ऑल राउंड ग्रोथ इज रिक्वायर्ड. जो आपने बात की कि मिडल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करना है, वो तो अंडर सी सबमरीन केबल्स के थ्रू होता है. अभी उसमें थोड़ा वक्त है. अभी हमें ज़रूरत है कि हम हर सिटी को के अंदर अंडरग्राउंडिंग करें, अंडरग्राउंड केबलिंग करें, ताकि जो ये ओवरहेड नेटवर्क हैं जो काफ़ी अगली दिखते हैं, आई मीन AT&C लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन सब से हमें छुटकारा मिले और जो पावर का लॉस हो रहा है वो बचे. हमें पावर की क्वालिटी को भी स्ट्रेंथन करना है, और वो जब तक डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन नहीं होगा तो वो नहीं होगा. बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स पिछले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की पिछले 10 सालों में आई हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन किया है. दूसरी बात, स्मार्ट मीटरिंग, बहुत बड़े स्केल पर स्मार्ट मीटरिंग का काम चल रहा है. उसमें प्रीपेड मीटर्स भी हैं और पोस्ट पेड मीटर्स भी हैं. इसका पर्पज़ ये है कि प्रीपेड मीटर्स में एक आदमी को पता है कि मेरी जेब में इतने पैसे हैं, तो उतनी ही अमाउंट की बिजली का मीटर खरीदता है और उसके उतना ही यूज़ करता है. और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी पूरा रेवेन्यू मिलता है. तो ये दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं ट्रांसमिशन में. अब अंडरग्राउंड हाई टेंशन केबल, हाई वोल्टेज केबल्स का वक्त आ रहा है. जो ओवरहेड ट्रांसमिशन है उसमें राइट ऑफ द वे की बड़ी प्रॉब्लम है. ज़मीन नहीं है अर्बन एरियाज़ में, तो अगर ज़मीन नहीं है तो आपको अंडरग्राउंड केबलिंग पे जाना पड़ेगा, जिससे ज़मीन की वेस्टेज नहीं हो. और दूसरा, ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है कंपेयर टू ओवरहेड नेटवर्क. हाई वोल्टेज DC डायरेक्ट करंट केबल्स का चलन आ गया है. बहुत से प्रोजेक्ट्स इंडिया में एग्जीक्यूट हुए हैं, अभी इंपोर्टेड केबल्स के से हुए हैं, और धीरे धीरे हम इंडियन कंपनीज भी इन प्रोडक्ट्स में आ रही हैं. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो पुराना ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ACSR कंडक्टर्स का, उसमें भी ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ ने हाई टेंशन लो सैग कंडक्टर्स लगाए हैं, जिससे उसी सर्किट की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है या पावर कैरिंग कैपेसिटी है वो दुगनी हो जाए. तो ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं. बट मेजर पब्लिक के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जितना स्ट्रेंथन होगा, पब्लिक को तो उससे फ़ायदा होगा. गुप्ता साहब, एक ज़माना था जब हम सुनते थे कि बैंक्स में कंप्यूटर लगने वाले हैं और स्ट्राइक हो जाती थी हड़ताल पे, नौकरियां चली जाएगी, कंप्यूटर आ जाएंगे तो लोगों के पास काम नहीं होगा. आज हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा बात करते हैं. किस तरह से कॉरपोरेट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके बड़े लीडर बन सकते हैं? किस तरह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके हो सकती है, ये समझाइए. देखिए, अच्छा, दोनों गुप्ता साहब हैं. प्रदीप जी. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, अब तो सारे कॉरपोरेट्स ने एक रियलाइजेशन हो गई है कि ये इनएविटेबल है, और इससे जो जिस तरह की प्रोडक्टिविटी की जो एनहांसमेंट होती है, जो इम्प्रूवमेंट होती है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में आजकल कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो कि कहेगी कि नहीं, मेरे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए. बिजनेस शुरू होते ही सबसे पहले चीज़ वही होती है. जो चेंज जो एक ज़रूरी है वो ये है कि एक थिंकिंग बदलनी है. इट हैज़ टू बी डिजिटल फर्स्ट काइंड ऑफ थिंकिंग. राइट. तो वो
एंड स्टार्टअप्स के साथ यही चीज़ होती है कि वो लोग जो है हमेशा टू बिगिन विद सबसे पहले जो है डिजिटल नेटिव्स होते हैं, और अगर वो डिजिटल नेटिव्स हैं तो उनकी जो सारी थॉट है वही जो है उसी लाइन में होती है कि किस तरह से हम जो है उसको डिजिटली सारे बिजनेस को कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें कि इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज आया है स्टार्टअप इकोसिस्टम से, क्योंकि इनोवेटिव होते हैं और बड़े फास्ट होते हैं, एजिलिटी बड़ी तेज़ होती है और दे थिंक लाइक डिजिटल नेटिव्स। तो उसकी वजह से जो है एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है, और आगे चल के जो है हमको सभी कॉरपोरेट्स को अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रेंथन करना होगा, और सिक्योरिटी के बारे में एक ध्यान ज़रूर रखना होगा, और प्राइवेसी के बारे में। और वहाँ पे रेगुलेटरी इश्यूज जो हैं वो काफ़ी इस वक्त बहुत डिस्कशन भी उन पे चल रहा है, और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें नई आएंगी, लेकिन ये एक दो चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे। अनिल, ये आप देखेंगे कि गुप्ता जी भी दो हैं, प्रदीप जी भी दो हैं, और मैं थोड़ा इनका हूँ और थोड़ा इनका बैठे हैं। प्रदीप गुप्ता जी बीच में बैठे हैं, तो इसलिए जरा संभाल के सवाल पूछना पड़ेगा। तो प्रदीप अग्रवाल जी, let me turn to you. ये जो what you were just saying about changing the mindsets, right? Changing the systems. I'm sure in an area like real estate, more than anything else, linking to the question that Anil started by asking you, there must be a lot of people who would be saying कि नहीं भाई, इंडिया में तो ऐसा ही होता है, ये हमारा सिस्टम है, ये रिवाज है, नंबर 2 होता है, 40% ब्लैक मनी देना पड़ेगा, सिस्टम में ये करना पड़ेगा, सिस्टम में ये होता है, सिस्टम ऐसा है। हाउ डू यू चेंज the mindset to say that the system can change, and is that starting to happen? So विक्रम जी, ठीक कहा आपने, माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा इंडिया में होता था, अब शायद इंडिया ये बदल रहा है। आप ये देखिए कि जैसे अनिल जी ने भी पूछा कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी एक 10 साल, एक डिकेड में ही बनाई जा सकती है। आज मार्केट कैप हमारी 2 बिलियन से ज़्यादा की है, एंड हम रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं एक्सचेंज के अंदर। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल। आप अपने सिस्टम को कॉर्पोरेटाइज करिए, जो इंस्टीट्यूशंस आपके साथ हैं उनको ये भरोसा दिलवाइए, जो इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं, कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, और उनको विजुलाइज होना चाहिए। ये आपके इन्वेस्टर्स को भी, आपके जो फंड्स देने वाले उन लोगों को भी, आपके कस्टमर्स को भी आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल एस्टेट के अंदर ये जो 40% 60% का काम बहुत ज़्यादा होता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब डिस्करेज हुए इन चीज़ों से। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर आज आप कोई काम ऐसा करते हैं तो ज़रूरी नहीं उसका आज आपको भुगतान करना पड़े, हो सकता है और 2 साल के बाद आपके घर तक पहुँच ही जाएंगे वो लोग जिनको पहुँचना चाहिए। एंड दूसरी बड़ी बात, अगर आपको रियल में कंपनी बिल्ड करनी है तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। क्यों, जब भी आपका फॉरेंसिक हो, फॉर एग्जांपल देखिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेंसिक करते हैं, एंड फ़ोन करते ही कॉल सेंटर में या कहीं पे भी ब्रोकर को वो 2 मिनट में बताते हैं, हाँ जी इतना बनेगा बात, इतने में होता है काम। तो वो क्लियर हो गए कि इसका मतलब यहाँ पर काम परफेक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट चेंज हुआ है। मैंने करके भी देखा है, ईजी भी बहुत है, केवल आपको इस चीज़ पर रहना पड़ता है कि नहीं हमारा सिस्टम यही है, हम इस सिस्टम पर चलेंगे। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस सिस्टम को, कि आज चाहे कोई भी क्यों ना हो उसको पता है कि अगर इस कंपनी में जा रहे हैं, यानी जितने भी बड़े ब्रांड आप नाम ले लें उनके अंदर कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और जब भी वो कंपनी जितनी बड़ी हुई हैं, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा अनिल जी, जब आप ये देखिए रियल एस्टेट जो हमारी देश की जीडीपी में 2nd लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कृषि के बाद आता है, कम यानी पूरी इंडस्ट्री की आज वैल्यूएशन क्या है। हमारी जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सारी लिस्टेड कंपनीज को अगर हम जोड़ लें तो 5 लाख करोड़ रुपए से भी कम की वैल्यू है। सिर्फ एक टाइटन एक कंपनी है, उस इकल्ली टाइटन कंपनी की 3,15,000 करोड़ रुपए वैल्यूएशन है, सिर्फ इकल्ली। आप ये देखिए कि पूरी इंडस्ट्री जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है
जो लोगों को समझना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक करने के लिए कहीं ना कहीं बड़े तरीके से सोचना होगा, और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी की जिन्हें आप बात कर रहे हैं वो लोगों को दिखानी पड़ेगी। सर ये भी वैल्यूएशन तब है जब पिछले 2 साल से हम रियल एस्टेट स्टॉक्स इतने रिकमेंड कर रहे हैं कि इनमें बड़ी वैल्यू है, तब जाकर ये भाव हुए हैं। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का आपने इतना बड़ा पैसा बनवाया है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। लोग कहते थे बेच दो, और आप कहते थे नहीं आप रोक दो, बेचना नहीं है और लेना है। थैंक यू। Good advice, Anil. Pradeep Gupta, if I can come to you. Part of what he's saying is also being linked to technology, because the income tax department and the others after the budget, I was getting a chance to talk to them, and they were saying it's because they have the data and because they can use AI now to process the data that they can catch all of that. But I want to come back to startups. You're a member of the Indian Angel Network. You've been working very closely with a large number of startups. And it was a view that there's a sort of a funding winter that has arrived, that it is not that easy for startups to continue to raise money. A couple of the more high-profile cases that we're seeing right now, whether it's Byju's, Paytm, will again increase that. Do you think it is going to be easy for startups to continue to raise money, or is there a funding winter approaching? Or here? So absolutely, I mean, good businesses even during this funding winter raised capital. In fact, there have been, we have been now investing in almost about, I would say, 1 to 2 companies every month. So even during this funding winter, IAN would have invested in at least about 25, 30 different companies. These things happen. These happen cyclically. और ये मैंने पहली साइकिल नहीं है, कई ऐसी साइकिल्स देखी हुई हैं। जब 9/11 हुआ था उसके बाद फंडिंग विंटर आई थी, फिर उसके बाद अगेन वैल्यूएशंस शॉट अप। जब वो 2008-9 के अंदर यूएस का ब्रेकडाउन हुआ था तो तब भी जो है स्लो डाउन जो हुआ था, तब भी फंडिंग विंटर आई थी। फिर उसके बाद अगेन वी सॉ अ सेकंड रिसर्जेंस, एंड आई थिंक द साइन ऑफ दैट फंडिंग विंटर इज नाउ ओवर. Okay. But the good thing is that the wise investors actually make better money during these winters because they get good valuation and they are able to invest at the right sort of a price. So actually अच्छा है अगर हर इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत इस तरह की विंटर आती रहे तो उसके बाद जो है वो समर अच्छी होती है. अनिल गुप्ता साहब, हर वक्त पर पॉलिसीज़ को लेकर कुछ न कुछ बड़े जुमले चलते रहते हैं. कभी पॉलिसी पैरालिसिस का जुमला चलता है, कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का चलता है. आपको केबल्स बनाना आता है, बेचना आता है, प्रॉफिट करना आता है. ऐसा क्या किया जाए कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं बड़ा स्मूथ हो जाए, आसानी से हो और आपको फालतू के झंझट से मुक्ति मिले और काम करने में बड़ा मज़ा आए? क्या पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है उसके लिए? देखिए, मुझे ऐसा कोई इसमें हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई पॉलिसी चैलेंज नहीं दिखता है. एक ही मैं एक इंस्टेंस आपको देता हूँ, उदाहरण देता हूँ जो एक्चुअली में पॉलिसी चैलेंज है. बहुत साल पहले सरकार ने कहा कि हम ओपन एक्सेस पॉलिसी देंगे, आप डेवलपर्स सोलर फार्म्स लगाएं और इंडस्ट्री उनसे एग्रीमेंट करके व्हीलिंग चार्जेस देकर हम कहीं पर भी पावर ले सकती है. दिस इज़ कॉल्ड ओपन एक्सेस पॉलिसी. बट जब आप एक्चुअल ग्राउंड पर ट्रांसमिशन कंपनी से परमिशन लेने जाते हैं तो वो डिनाई करती हैं या स्ट्रेट अवे डिनाई नहीं करती हैं. बहुत सी ऐसी कंडीशंस लगाती हैं या देती नहीं है जिससे आप वो कर ही नहीं पाते हैं. इसका कारण ये है कि उनके अब माइंड में ये है कि हमारे क्रीम कस्टमर्स तो इंडस्ट्री है, अगर वो सारे प्राइवेट वाले ले जाएंगे तो हमारे पास कौन बचेगा? हाउस होल्ड और एग्रीकल्चर, जहाँ से हमें रेवेन्यू आता नहीं है. तो दिस इज़ द रीज़न कि वो लोग परमिशन देते ही नहीं हैं. वो कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके सोलर पावर प्लांट लगाइए और व्हील कर लीजिए, आपका प्लांट है, कैप्टिव प्लांट हो गया. लेकिन अगर कोई डेवलपर लगा कर दे रहा है और आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेसिस के ऊपर आपको पावर सप्लाई कर रहा है तो हम उसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन चार्जेस लगाएंगे, व्हीलिंग चार्जेस बढ़ा देंगे. तो आपको जो कॉस्ट ऑफ पावर है वो तो सेम पड़ जाएगी जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ले रहे हैं. तो उस ओपन एक्सेस पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो है मैंने एक उदाहरण दिया.
बाकी तो अगर जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, जितना आप मूवमेंट ऑफ गुड्स को इम्प्रूव करेंगे, लेबर रिफॉर्म्स करेंगे, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क मुझे उसमें ज़्यादा चैलेंज नहीं लगता है. All right, we are almost out of time. Maybe I'll throw one last question which all of you can answer in just a few words. We've all been talking I think all of you have been sounding very confident, very optimistic. How good do you think the situation will be between now and, let's say, 2030? How good will the situation be? And what could potentially go wrong? What could potentially derail that progress? If we can start with you, Mr. Agarwal, and फिर इस तरफ आते हैं. बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक. अगले 7 साल में जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ स्टोरी में चेंज मिलेगा. कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, क्योंकि आप कोई ग्रोथ अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे. मुझे लगता है एक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जिस तरीके का कंसंट्रेशन गवर्नमेंट ने किया हुआ है वो जारी रहना चाहिए एज इट इज़, क्योंकि इस बार भी बजट में उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि वही की है इस देश की एक जो इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए. दूसरी चीज़ मुझे जो समझ आती है कि आज रियल एस्टेट में जो फाइनेंस है उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बैंक्स हैं वो प्रोजेक्ट पर फंडिंग कर रहे हैं, लैंड पर फंडिंग नहीं कर रहे हैं. तो कम से कम कोई पॉलिसी आरबीआई की तरफ से ऐसी आनी चाहिए जिससे जो लैंड का जो प्राइस है, चाहे उसको 50% प्रमोटर इक्विटी करे, बैंक 50% उसके अंदर पैसा दे, लेकिन लैंड के ऊपर फंडिंग होनी चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा अनलॉक होगा आने वाले वक्त में. तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर करी जाएं तो इंडिया ग्रोथ कर सकता है. I think the big issue is digital security. Because yes, we are now all connected and we are all reaping the benefits, but that also has created its own dangers. Not just within the country, but dangers from our neighbors and so on. And I think we need to look at that in a very, very active manner to ensure that this optimism which is there does not get derailed, and it can in a big way. मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है. सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है किसी भी इकोनॉमी के लिए या इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो है, और बहुत अच्छे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है. भाई हम भारतीय हैं, हमें तो 12-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट की आदतें पड़ी हुई थी. आज 8% पे 8.5% पे लोन मिलता है, और इक्विटी मार्केट अवेलेबल है इंडस्ट्रीज़ के लिए. अगर किसी की अच्छी इंडस्ट्री है, अच्छा पोटेंशियल है, तो पैसा रेस कर सकता है बाज़ार से. तो मेरे ख्याल से अगर फाइनेंस अवेलेबल है तो अब नेक्स्ट चैलेंज आता है सिर्फ स्किलिंग ऑफ मैन पावर. वो एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम इफेक्टिव वर्क फोर्स को गांव से इंडस्ट्रीज़ में मूव करें, और जो इंजीनियर्स पढ़ के निकल रहे हैं उनके माइंडसेट को चेंज करें कि उनको फैक्ट्रियों में काम करना है. क्योंकि पिछले कुछ 20-30 सालों में जो एक माइंडसेट बना है ना, जो भी इंजीनियर पढ़ के निकलता है वो सोचता है मुझे आईटी में काम करना है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, बट फैक्ट्रियों में तो ये एनवायरनमेंट नहीं होता. तो ये एक माइंडसेट चेंज करना है जिससे लोग ब्लू कॉलर जॉब में आएँ और फैक्ट्रीज जॉब में आएँ. I think we're going to have to leave it there, but thank you, all three of you, so much for those very valuable insights. And let's hope your positive projections for the next 7 years actually come to mind. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much for this enlightening session, Leader Talk. We could clearly see a roadmap to future 2030, charting out a roadmap. And clearly, India is set to become third largest economy by 2030. We are quite hopeful of that. Now, for our next guest keynote, let's hear what Mr. Nilesh Shah, MD Kotak Mahindra Asset Management Company,
has to say about the Amrit Kal of Indian economy. आइए जानते हैं कि वो आने वाले 20 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की कैसी तस्वीर देखते हैं। 90 के दशक में भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू किया और 2014 से हमने इकोनॉमी को और तेज गति प्रदान की। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। किसी को लगेगा कि भारत ने इतनी प्रगति कर दी, अब आगे क्या? मुझे लगता है आने वाले 25 साल वाकई भारत के अमृतकाल होंगे। ये इसलिए अमृतकाल होंगे बिकॉज एक त्रिवेणी संगम भारत में हो रहा है। एक समय था 90 के पहले जब भारत की टैलेंट जो आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, आईआईएम जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में जनरली देश के बाहर जाती थी। जब हमने सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, शांतनु नारायण जैसी टैलेंट को बाहर भेजा तो वो जाके कहीं गूगल के सीईओ बन गए, कहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए, कहीं अडोबे के सीईओ बन गए। आज यही टैलेंट भारत में रह रही है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भारत में रह के एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। अगर टैलेंट भारत में रहेगी तो कल का माइक्रोसॉफ्ट, कल का गूगल, कल का अडोबे शायद भारत में खड़ा होगा। शांतनु नारायण जो अडोबे के सीईओ है, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं इस समय के भारत में होता तो हैदराबाद छोड़ के अमेरिका कभी नहीं जाता। भविष्य के शांतनु नारायण जैसी टैलेंट भारत में रह रही है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है और इसीलिए अमृतकाल में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल लगता है। एंटरप्रेन्योर्स को पैसा भी चाहिए। एक समय था आपका इनिशियल कैपिटल आपके माता पिता या दोस्त देते थे। अगर आपके माता पिता के पास पैसे नहीं हो तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। आज वो लिमिटेशन नहीं रहा। कई प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड है, हजारों से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस आइडिया के दम पे पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। पिछले 10 सालों में $140 बिलियन से ज़्यादा पैसा स्टार्टअप्स में लगा है और यही स्टार्टअप आज बड़ी बड़ी कंपनी को कंपटीशन दे रहा है। टैलेंट और कैपिटल, इनको सक्सेसफुल होने के लिए एक और चीज़ चाहिए, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2013 में भारत में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, मोटा मोटा उससे दुगना इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 तक बन जाएगा। 82,000 किलोमीटर के आसपास की रोड थी, 2024 तक 1,65,000 किलोमीटर बन जाएगी। 70 के आसपास एयरपोर्ट थे 2014 में, 2024 में तकरीबन 200 के आसपास हो जाएंगे। 22,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन इलेक्ट्रिक थी, 2024 में उससे हम 58,000 किलोमीटर के ऊपर कर देंगे। 600 मिलियन टन कोयला उत्पादन करते थे 2014 में, 2024 तक बिलियन टन के आसपास पहुंच जाएंगे। पावर कैपेसिटी जो 235 गीगावाट थी, वो मोटा मोटा 435 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। पोर्ट कैरिंग कैपेसिटी 1400 मिलियन मेट्रिक टन थी, वो 2800 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर हो जाएगी। रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 2014 से 24 के 10 सालों में उतना काम कर दिया जो 2013 तक किया था।
टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल, ये तीनों का त्रिवेणी संगम हो जाएगा तो भारतीय इकोनॉमी को कौन रोक पाएगा? ठीक है स्वाति, आगे बढ़ते हैं अभी. We'll move to the next segment, of course, to discuss the next aspect, which is to do with the automobile market. Now, India is among the world's largest automobile markets. More than 4 million passenger vehicles were sold in India in 2023 itself, and India's automotive marketplace, it grew over 8% last year. And it goes without saying that this sector is pivotal in India's growth story. बिल्कुल, और ये रफ्तार दिखती भी है हमारे ऑटोमोबाइल नंबर से, जो कि अभी शिवर ने बताई. और सबसे इम्पॉर्टेंटली इस पर डिस्कशन करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एंड टू डिस्कस इट्स ग्रोथ and across vehicle segments to understand the upcoming trends and accelerating progress, mapping the evolution of India's automotive landscape. Now, we would like to call our next panel, but before that, Mr. Vikram, Chandra and Mr. Anil Singhvi, please come on the stage once again for this session. And for our guest panel, we would like to invite on stage Mr. Shashank Srivastav, Senior Executive Director, Marketing and Sales, Maruti Suzuki India, and Mr. Vikram Pahwa, President and CEO, BMW Group India. Let's have a huge round of applause. Hi, Shashank. How are you? Hi, Vikram. Hi. Please. Anil, after two Pradeeps and two Guptajis, now there are two Vikrams. So now we have to plan this accordingly. Absolutely. So why don't you start? Of course. So, I think globally, IT इंडस्ट्री के बाद जो सबसे बड़ी पहचान हिंदुस्तान की बन रही है, वो ऑटो इंडस्ट्री से बन रही है. और अब दुनिया ये मानने लगी है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स, ऑटो एंसिलरी, कार्स, बाइक्स, हिंदुस्तान बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब. और आपको पता ही होगा, मारुति हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी बन चुकी है. BMW पूरी दुनिया भर में नाम कमाने के बाद हिंदुस्तान में जिस तरह की ग्रोथ दिखा रही है, तो आज हमने सोचा क्यों ना दो ऐसी कंपनियों के साथ मुलाकात की जाए और समझा जाए, जिसे एक मास प्रोडक्ट वाली कंपनी समझा जाता है, दूसरे को बड़ी क्लास प्रोडक्ट वाली कंपनी समझा जाता है, लेकिन दोनों के बीच में हिंदुस्तान की ग्रोथ कहाँ से आ रही है और किस तरह से हमारी इंडस्ट्री पूरी दुनिया पर आगे छा जाने वाली है, यह आज हमारा टॉपिक है. विक्रम, आपसे शुरुआत करता हूँ. ये लग्जरी कार अचानक से अफोर्डेबल कैसे हो गई? ऐसा हो रहा है आजकल कि मतलब शायद एंट्री लेवल कार्स इजीली मिल जाए, लेकिन आपकी गाड़ियों के लिए वेटिंग ज़्यादा करनी पड़ती. तो हिंदुस्तान में ऐसा क्या बदलते हुए आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद रहे हैं? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान अब किसी देश से पीछे नहीं रहा है. मेरे हिसाब से ये एक्चुअल रीज़न है. आज तक जैसे आप बाकी भी किसी क्षेत्र में देख लें, इंडिया किसी चीज़ में पीछे नहीं है, तो इस चीज़ में क्यों पीछे रहे? अभी भी अगर मैं देखूं कि लग्जरी कार्स जो हैं इंडिया में मुश्किल से टोटल इंडस्ट्री के कुछ 1% के करीब बिकती हैं. वर्ल्ड ओवर जो एवरेज है ये कम से कम 15% की है. तो अगर आप ये देखें तो अभी इंडिया को काफ़ी आगे बढ़ना है. एंड आई थिंक जो इकोनॉमी में हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस की बात हुई थी अभी पिछले पैनल में, दैट कॉन्फिडेंस इन द सोसाइटी इज़ मच स्ट्रॉन्गर. Also COVID के बाद, there is a realization that you live only once, or you have to enjoy your life. And when you start thinking about enjoyment, luxury always comes in your mind always as number one. But I have to thank him. He creates the customer and then migrate upwards to us. All right, Mr. Srivastava, let me throw that to you then. Taking forward from what Anil was just saying, if India is going to become a manufacturing hub, and we all believe that India has the potential and the capability to become one of the greatest manufacturing hubs, what China plus one we should be ahead of China. Automotives has to be one of the drivers of that, because anywhere in the world,
automotive manufacturing is one of the biggest manufacturing industries. How do you think India is positioned to become a manufacturer, not just of automobiles for India, but potentially as a base from where you can export around the world? Yeah, I think very pertinent question because, even though today manufacturing is roughly 16-17% of our GDP, 50% of that is contributed by automobiles. That's about 7.5%. And you rightly pointed out, manufacturing is most important because if you see the history of growth in other countries, बाकी मुल्कों में जो माशी तौर पे जो बदलाव आया है, उसमें सबसे पहले manufacturing is the lead. And in that respect, we are actually at 15, 16, 17% of the overall GDP is a little behind. Targets are heavy. We are supposed to reach 25% in the next 3-4 years. Automobile should reach around 12.5%. And there are indications that we are going to get there. And the reason for that optimism is because not only is India itself a large market giving us the economies of scale, we are now the third largest passenger car vehicle market in the world. The largest two-wheeler, the largest three-wheeler, the largest tractors, buses, the big buses. We are one of the largest even in the large buses. So scale है और जहाँ तक बरामदगी का सवाल है जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए हमारे पास अब एक वो स्किल और जो टैलेंट पूल है वो भी हमारे को हासिल है और with scale and as somebody was saying that Triveni of capital, talent and infrastructure, I think we are on the right path and you would have seen our exports also going up substantially. Vikram, if I could just do a follow-up question to that. This is also a very interesting time for the entire automotive sector, not just in India but around the world, because you're going to be facing an inflection point as petrol and diesel and those cars start to take a back seat and electric vehicles become more and more prominent. And this is one of the areas where people feel that China has got, yes, there's Tesla, but there's people who feel that China has got a lead. They're very strong competitors like BYD. How do you see India positioning itself in this entire new ecosystem that is arising? And so, for example, companies like BMW will say, well, maybe we can meet electric vehicles and make them in India for the world. I think you're right that the kind of transformation that is happening in the auto industry across the world has never been witnessed before. Right? I think I've been working in the industry for 35 years, and we know the industry has been always for the last 100 years very similar to what it's been now. But I think, based on what's happening with the consumer behavior change, what's going to happen with the technologies that will develop, and it's not only just electric, it'll be hydrogen as well tomorrow. So what we'll see, first of all, is that there'll be multiple technologies coexisting, which has never happened before in auto industry. That's the first thing that will happen. The second thing that's going to happen is about the life cycle of the technologies will reduce. So traditionally in auto industry, the life cycle of technologies used to be somewhere around, let's say, for a platform or an engine, you would say 15 to 20 years. For a particular model, it'll be around 6 to 7 years. And that'll shrink down to somewhere between 3 to 5 years. So that will be the second change. And third, which was going to be the case pre-COVID, was the ownership pattern was going to change, that people were going to share mobility. I think that has disappeared. So at least that transformation is stopped. But the other two are where I think India's got a great advantage in. Right? Because we are a diverse country, right? And when it's talking about diverse technologies, I think Shashank is talking about the scale that we have in India in terms of demand. And demand is yet to reach that potential what India has. We're talking about a worldwide industry of 80 million. We are only at 4 million. Compared to the population that we have, right? We should be much, much bigger than what we are. We compare ourselves with China from time to time. China is sitting around 10 to 12 million, right? So you can see the kind of headroom that exists for the Indian auto industry to grow. And because of that scale, all these technologies will coexist in India, which may not be the case with many of the developed countries, right? They might switch one technology off or the other. So for me, I think India's got that advantage that the ecosystem, the supplier network will remain for all these technologies, which could be the source of supply
to the world, right? That's one. And the second thing about, we spoke about a lot of talent being in India, right? And now talent drain not happening. Or rather, it's a reverse talent drain that is happening right now. So when you're talking about technologies or platforms having shorter life cycle, that means you need more skills and more people on ground developing those technologies. And again, I think India is in a great position there to be able to contribute to the world from an auto industry perspective. If I'm right, you moved back from Australia, right? Sorry, what is that? If I'm right, you moved back from Australia, right? Oh, well, actually, no. I moved from India to Australia and back here, right? Yeah. So talent is coming back to India. शशांक जी, एक ज़माने में हमारे यहाँ गाड़ी मतलब बड़ी लग्जरी होती थी, 4-व्हीलर कार है. Now it is necessity, right? एक और हिंदुस्तान में इतनी डिमांड है, आपको यहाँ के लोगों के लिए गाड़ियाँ बनानी, और दूसरी ओर ग्लोबल जायंट बनना है. पूरे वर्ल्ड ओवर हमारी गाड़ियाँ भी टॉप 5, टॉप 10 ब्रांड में आए ग्लोबली. तो इसके लिए इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को क्या चाहिए, क्या सपोर्ट आपको चाहिए पॉलिसी के लिहाज से, माहौल के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, कि जिससे आप ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकें? जी, जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि हमारे जो अपसाइड है वो बहुत बड़ा है. जी. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. हमारे मुल्क में जो कार का पेनिट्रेशन है वो 32,000 पे, जबकि जो तरक्की पजीर जो मुल्क हैं जैसे यूरोप के हैं या अमेरिका है, जापान है, वहाँ पे 700 पर 1000 का वो है. तो बहुत ज़्यादा हमारे को अभी स्केल मिल सकता है, और उस स्केल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैपिटल भी करें, और साथ ही साथ एक जो गवर्नमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है वो उसमें और इजाफा हो, और वो हो भी रहा है. अगर आप देखें PLI की जो स्कीम है वो स्केल के लिए बनाई गई है, ताकि जितने भी जो कंपनीज़ हैं, जो तंजीमें इस बाज़ार में हैं, वो अपने स्केल को ग्लोबल लेवल पे कर सकें. और ये जो रुझान है इसको मुझे बड़ा मुस्बत लग रहा है, पर पॉजिटिव ट्रेंड है ये, बिकॉज आई थिंक दिस विल कंटिन्यू, एंड विद दीज सपोर्ट सच एज द PLI, even the FAME scheme, which should help us in the hybrid and the electric vehicles, I think ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा, हमारे को जो कैपिटल तो है ही, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आगे भी काम बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने अभी हाल में जो बजट पेश किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने वो इकोनॉमिक वो रेलवे कॉरिडोर्स की बात करी, चाहे वो एनर्जी का कॉरिडोर या पोर्ट कॉरिडोर हो, उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी. तो वो सब चीज़ें हमें एक कॉम्पिटिटिव एज देगी, और उससे हमारी बरामदगी भी बढ़ेगी, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेगा, स्केल भी आएगा, और अगर हम क्वालिटी पे अच्छा फोकस रखें तो यकीनन हम एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बन सकते हैं. हमारे साथ जनरल VK सिंह भी हैं. तो जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो जो सड़कें आजकल बनाई जा रही हैं, जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जो हाईवेज बन रहे हैं, उससे भी कार ओनरशिप will get a big boost, because people will want to buy cars, they want to drive on those roads. Absolutely. Of course, the more of these cars that you keep building, General Singh and the government will have to keep building more and more roads and more highways. Absolutely. In fact, if you see much of the growth that we have seen in the last few years, last 3-4 years, has happened because of the government's investment in capex, 50% of which is in road infrastructure. And that has helped us get out of that situation when consumption was taking a back seat. So government has stepped in, and I think now with the government saying that the capex would be lower going forward, probably the private sector has to come in and fill that investment gap, which was not there as far as capex is concerned. तो विक्रम, आज से 10 साल पहले अगर हम बढ़िया लग्जरी कार खरीदने जाते तो आप बोलते कार तो ले लीजिए, दिखाने के लिए ठीक है, इंडियन रोड्स है नहीं उसके लिए. दिस कार्स आर मेड फॉर यूरोपियन रोड्स और समथिंग, अमेरिका वगैरह वैसा है. क्या उसमें बदलाव आया है? यदि हाँ तो कितना, और कितना बदलने की ज़रूरत है? क्या आपकी जैसी BMW, मर्क, इस तरह की बड़ी पोर्शा, ये सारी गाड़ियाँ, इनके लिए ठीक ठाक रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी? और इसका एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन, सड़कें तो बन गई पर लोग गाड़ी चलाना कब सीखेंगे? एक लेन में चलो, 2 लेन में नहीं, 2 लेन में. Let me answer the first question first. Yes, absolutely. I think जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, एंड जो काइंड ऑफ रोड्स बन रही है,
absolutely people are enjoying our cars much more. Because you enjoy these cars when the road is smooth, less potholes, you know, then you can travel at good speeds as well. And you've seen the expressways that are being built today with speed limits of 120 kilometers an hour, right? So when you reach those kind of stages of infrastructure, you can really enjoy beautifully engineered cars. And that's why we are happy to provide those cars. But I think other thing that is going to happen, which I'll add on what Shashank said, is about when this infrastructure develops, there'll be decongestion of the cities as well, right? People will start staying outside, like it happens in every other country. You'll stay a little bit away because your travel distances will reduce, time will reduce now, because the road network is good. So you can afford to go and stay somewhere a little bit outside. And when you're doing that, then you'll buy more cars, number one, and you'll buy better cars. Right. Right? Because you want to then enjoy it. And then when the cities get connected with the infrastructure, with, you know, Colonel Singh is working on, absolutely, people will want to go on holidays in cars. Because it will take lesser time. Yeah. One question which I wanted to ask you, for a company like BMW, when you're looking at India, the nature of the sort of vehicles, the sort of made for India cars as opposed to made in India cars, is there a difference? Do you have to visualize the Indian consumer slightly differently for a couple of reasons? More cost conscious, obviously, that everyone knows about. But for example, in a BMW car, even in a 3 Series, certainly in a 5 Series car, it's almost being designed for somebody sitting in the back seat, not so much for driving comfort, but sitting in the back comfort. Is that something that you're increasingly keeping in mind? Yes, I think Indian customers are different, no doubt about it, because our use case of the cars is a little bit different as well, absolutely. Right? We like to spend short distances but long time in our cars. We spend time with families. So yeah, comfort is one of the bigger things. You know, so speed and performance take back seat compared to comfort. And we consider that in our designing as well, absolutely, when we're looking at cars for India. So the 3 Series that you spoke about is actually a longer version, which is the only country in the world with a right-hand drive version that we supply in India and produce in India. So those kind of things matter. But I'll correct you on one thing, Vikram. I don't think we are cost-conscious customer. We are value-conscious customers. There's a difference between the two, I think. Right. इस पैनल में हम चाहें तो घंटे भर बात कर सकते हैं, because you guys are, you know, the backbone of economy also. मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आप किसी देश की इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही, उसका पता आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से पता चल जाता है, उनकी ग्रोथ कैसी है. बिकॉज आप अगर ग्रो करें तो आपके साथ 500 इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, छोटी छोटी एंसिलरी इंडस्ट्री. सो बट समय की थोड़ी सी कमी है. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much to our guest. Anil sir, we would request you to please stay on. Okay. All right, we'd now like to call upon stage our guest of honor for the evening, General V.K. Singh, Honorable Minister of State for Road Transport and Highways and Civil Aviation. Sir, thank you so much for joining us here this evening. Welcoming you on stage. क्योंकि अभी ऑटोमोटिव सेक्टर की बात हो रही थी, फर्राटा भरती गाड़ियां कैसे सड़कों पर चलती है और क्या है उसका आगे आने वाला भविष्य, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और एविएशन पर सरकार का विजन अब जानते हैं सर. जी, पिछले कई सालों से देश की ग्रोथ को लेकर सबसे ज़्यादा बात होती तो एक चीज़ को लेकर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हो तो ग्रोथ आएगी. और इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है. और ये सारी मिनिस्ट्रीज को हैंडल करने वाले मंत्री जी वीके सिंह साहब हमारे साथ हैं इस वक्त. सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए. क्योंकि हम एक चीज़ समझते हैं, अगर आपकी मिनिस्ट्री काम कर रही है तो हिंदुस्तान की ग्रोथ 7%, 8% बनी रहेगी. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा अपना मत है जी. जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के ऊपर जी, वो शायद और किसी चीज़ का नहीं होता. और उसका कारण है, उदाहरण के तौर पर आप घर बनाते हैं. जब आप घर बनाते हैं, कम से कम आप 200-250 इंडस्ट्रीज़ के साथ संपर्क होता है आपका. कोई कील बनाता है, कोई लोहे की छड़ बेचता है, कोई सीमेंट देता है.
ऐसे करके अगर आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें 200-250 इंडस्ट्री उसमें मिल जाती है। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर जो आप पैसा लगाते हो वो सब जगह बढ़ता है, स्प्रेड्स आउट, और उससे आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है जी। और आपने देखा होगा पिछले हमारे तकरीबन 4 बजट सबके सब कैपेक्स ओरिएंटेड थे। आप स्पेंड करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करिए और देश का उत्थान भी होगा, लोगों का भला भी होगा और इकोनॉमी भी आपकी चमकेगी। इस बजट के अंदर देखिए 11,11,111 करोड़ रुपए जो हैं वो कैपेक्स के लिए, इसका 4.5 टाइम्स इफेक्ट जो है इकोनॉमी पर जाएगा। तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इकोनॉमी को की उन्नति के अंदर वो और कंट्रीब्यूशन देता है। तो एक चाहे रोड्स और हाईवेज हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे रेलवेज हों, इनका बहुत बड़ा योगदान है इकोनॉमी के ऊपर। पिछले अभी हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर बना और हम तो सोचते थे कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन पता चला साथ साथ में एयरपोर्ट भी बन रहा है। और एयरपोर्ट कब बन के तैयार हो गया पता नहीं चला, लेकिन उससे एक बात पता चली कि अगर सरकार ठान ले, सोच ले कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह बनाना तो बना के रहेगी और बना भी लेगी। क्या कुछ बदला है पिछले 5 से 10 सालों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ इतनी तेज़ी से आई है? क्योंकि पहले बड़ी चुनौतियाँ होती थी, प्रोजेक्ट अटक जाते थे, कहीं जाकर फाइल अटकी है, कहीं जाके कोई प्रोजेक्ट बीच में अटक गया। अब ऐसा क्या बदला है? बहुत बड़ा बदलाव आया और सबसे बड़ा बदलाव आया कि आप 2014 के अंदर मोदी जी को लेकर आए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, सबसे बड़ा बदलाव था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो सोच है वो बहुत दूर की सोच है। और मैं आपको एक मूल मुद्दे पर आने से पहले एक छोटा सा एक दृष्टांत देता हूँ। मैं उनसे पहली बार 2013 में मिला, जब हम एक्स सर्विसमैन रैली ऑर्गेनाइज कर रहे थे रेवाड़ी के अंदर। तो मैं उनके पास गया था पता करने के लिए कि उनका क्या रोल होगा उसके अंदर। और बात बात में उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बना रहा हूं सरदार पटेल की गुजरात में। जी। तो नॉर्मल अब तक जितनी चीज़ें चलती आई हैं आप उतना बड़ा नहीं सोचते। मैंने कहा जी कितनी ऊंची होगी? बोले दुनिया में सबसे ऊंची होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए देश के हर गांव में टीम भेजी है जो वहाँ की मिट्टी और लोहा लेकर आएगी। और तब मुझे लगा कि इनके अंदर कुछ ऐसा है जो बड़ी चीज़ सोचते हैं और बहुत विस्तृत तरीके से सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब मैं आपको बताता हूँ रोड्स और हाईवेज के ऊपर क्या बदलाव आया। पहले रोड के लिए बिड होती थी, बिड के अंदर लोग बाग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर को रोड मिल जाती थी। उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर को पूछता नहीं था कोई बनाई कि नहीं बनाई, तुमको ज़मीन मिली कि नहीं मिली, वो सब कॉन्ट्रैक्टर का काम था। ज़मीन मिल गई, भागा दौड़ा, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होगा शायद ज़्यादा उसको कर लेगा, लेकिन ना तो उसके ऊपर कोई अंकुश था ना ही उसको कोई सहूलियत थी। और इसलिए कई रोड्स तो शायद 10-10, 12-12 साल तक चली। जी। अब एक बदलाव है। पहली चीज़ तो जब तक हमको 90% लैंड नहीं मिल जाता हम उसको अपॉइंटेड डेट नहीं देते। अच्छा। दूसरी चीज़ हम उसको एक टाइम लिमिट देते हैं, आपने इसको 2 साल के अंदर बनाना है, और उसके बाद उसको रिव्यू करते रहते हैं, उसके सिर पर खड़े रहते हैं ताकि वो 2 साल के अंदर बना दे। तो रोड बनती है, अच्छी बनती है। और जो लोग आप में से हमारे एक्सप्रेसवेज पर चले होंगे या अगर नहीं गए हैं तो मैं 1-2 रोड बता देता हूँ, उन पर ज़रूर जाकर आइए। साउथ से लेके नॉर्थ तक जो भी कोई आता है और रोड के जर्नी करके आता है, वो आकर 4-5 बार यही कहता है कि जी रोड बहुत अच्छी थी। सिंह साहब, बदलाव की आपने बात की, एक आपकी इजाज़त तो एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। बदलाव तो आपने भी बड़ा किया है, कहाँ एक और बिल्कुल वो
आर्मी चीफ के तौर पर एकदम डिसिप्लिन वाली लाइफ जो हमारे दिमाग में इमेज है आर्मी की, बस बिल्कुल नियम कानून से चलने वाले, और कहाँ राजनीति जहाँ पर सब तरह के एडजस्टमेंट हैं। तो ये बदलाव आप कैसे लाए और इस बदलाव में सक्सेसफुल कैसे हुए? ये बदलाव जो है मैं ये कहूँगा कि ये बदलाव एक बहाव का बदलाव था। 2012 में रिटायर हुआ तो उस समय मेरे सामने दो विकल्प थे, दो ऑप्शंस थे। एक तो ये था कि मैं जैसे हमारे पहले चीफ्स रहते आए वैसे रहूं, शाम को गोल्फ खेलो या सवेरे गोल्फ खेलो, अटेंड सम कॉकटेल सर्किट, 2-4 लेक्चर दे दो और जनरली सबको कोसते रहो। ये काम नहीं हो रहा है। गलती से मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा था कि कुछ गलत चीज़ें दिमाग में घुसी हुई थी कि सोसाइटी के लिए काम करना। घर वाले बड़े दुखी थे कि भाई जी आप अब आराम करने का टाइम है, व्हाट आर यू डूइंग? मैं कहा नहीं, आई वांट टू डू समथिंग विच फॉर द सोसाइटी। मैं किसानों के साथ काम करने लगा। वीएम सिंह के साथ गन्ना किसानों से मिला, दूसरे किसानों से मिला और उसमें फिर यूथ के साथ मिल गया। और मेरी एक थीम थी कि देश के अंदर एक सिस्टमिक बदलाव चाहिए। जो चीज़ें चली आ रही हैं 47 से, उसको जब तक हम बदलेंगे नहीं देश के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। और वो चलते चलते फिर एक दिन ख्याल आया कि मेरा जैसा एक फौजी जो रिटायर हुआ है, अन्ना हज़ारे, उसको लोग बाग फेंक कर चले गए, उसे कंधे पर चढ़कर कहीं और पहुंच गए। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं आपको दोबारा उसी जगह पे ले जाना चाहता हूं जहां आप जुलाई 2012 में थे जी। तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, एक यात्रा करेंगे जलियांवाला बाग से, आप अपने विषय पर बोलिए। उनका विषय एक था करप्शन के ऊपर, मैंने कहा मैं अपने विषय पर बोलूँगा और देखते हैं कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। वो यात्रा हमारी बड़ी सक्सेसफुल हुई। हमने पंजाब किया, हरियाणा किया, उत्तराखंड किया, उत्तर प्रदेश किया, राजस्थान किया, मध्य प्रदेश किया, आधा बिहार किया और उसके बाद वो बीमार पड़ गए। क्योंकि ये यात्राएं जो होती हैं सुबह 6 बजे शुरू होती हैं, रात के 12 बजे जाकर ख़त्म होती हैं, काफ़ी स्ट्रेनुअस है। और उसके बाद वो 3 महीने अस्पताल में रहे। जब आए तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये अब यात्रा के चक्कर में नहीं हूँ, मुझे अपना लोकपाल बिल के उस पर अनशन करना है। तो हमने उनको सपोर्ट किया और लोकपाल बिल पास हो गया। वो वहीं पर पहुँच गए जहाँ पर मैं चाहता था जी, यानी ख्याति के तौर पर। और उसके बाद मेरे पास एक साफ स्लेट थी कि क्या करना है जी। और तब जो है बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज आने लगे और बड़ी मुश्किल से 2014 के अंदर मन बनाया कि अब और कुछ नहीं तो चलो पॉलिटिकल सिस्टम को भी देख लेते हैं, और सिर्फ एक काम के लिए कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। पार्टी ने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और मैं तो ये कहूँगा दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसने 42 साल फौज में लगाए हो, कभी इलेक्शन नहीं देखा जी, नहीं कभी वोट की 42 साल के अंदर। तो कुछ चॉइसेस दी उन्होंने और एक दिन उन्होंने कहा कि आप गाज़ियाबाद चले जाइए। गाज़ियाबाद जानता था, गाज़ियाबाद की एक छवि थी वो जिला गाज़ियाबाद फिल्म वाली जी। तो एक चैलेंज के तौर पर मैं गया कि गाज़ियाबाद को सुधारना है। और पता नहीं आप में से कितने लोग गाज़ियाबाद के हैं या गाज़ियाबाद को जानते हैं। आज गाज़ियाबाद वो गाज़ियाबाद नहीं है जो 2014 से पहले। आज वहाँ पे ज़मीन भी महंगी है, शांति भी है, आपके कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हैं, सब तरह की बढ़िया रोड है। देश की पहली 14 लेन और 16 लेन रोड आपको गाज़ियाबाद में मिलेगी। अभी कुछ महीनों के बाद हमारी देहरादून वाली एक्सप्रेसवे थ्रू हो जाएगी। आप दिल्ली से 2 घंटे में निकलेंगे, गाज़ियाबाद होकर निकलेंगे। देश की पहली रैपिड रेल, जिसको नमो ट्रेन के नाम से बोला जाता है, गाज़ियाबाद के थ्रू जाती है। और यानी एक तरीके से एक बदलाव आया है जी, इसीलिए आया था। तो मैं आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि हम हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, बिजनेस लाइफ है, जीते हैं,
एक उम्र तक काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं अब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। या कुछ लोग पहले कर लेते हैं, बोले अब वो बहुत कर लिया, अब मैं रिटायर होऊंगा। लेकिन शायद जनरल सिंह साहब बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स में से होंगे जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ आर्मी चीफ के तौर पर भी आपने देश के लिए किया है और अब भी देश के लिए कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। And this is a different life. जी, This is a different life. Absolutely different life. It's got no semblance to the army. हाँ, मैं तो कभी फुर्सत में आपके साथ बैठूंगा तो ये समझूंगा कि किस किस तरह के एडजस्टमेंट आपने बनाए होंगे, क्योंकि जनरली मैंने सुना है कि सिविलियंस और आर्मी वालों की लाइफ में दिन रात का अंतर होता है। एनीवे, अब कुछ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी आपके पास है। आजकल एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बन गए हैं और लोगों को लगता है कि किसी इकोनॉमी की ग्रोथ तब होती है जब किसी को लग्जरी समझा जाए, वो नेसेसिटी बन जाए। तो एयर ट्रैवल किसी ज़माने में लग्जरी होती थी, आजकल तो मतलब ऐसा है कि हालत वैसी कि एयरपोर्ट पे खड़े रहने की जगह नहीं है, फ़्लाइट्स फुल होती है। ये बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, एयरपोर्ट्स का मैं ये कहूँगा कि इसमें एक बड़ा बदलाव आया जबकि मोदी जी ने कहा कि हमको आम आदमी के लिए कुछ करना है जी, और उड़ान स्कीम शुरू हुई। पूरे देश का आम नागरिक हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा कर सके, उसको ध्यान में रखकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पे कैसे पहुंचा जाए, इसके ऊपर मंथन हुआ और काम शुरू हुआ। 2014 तक हमारे पास 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। टुडे वी हैव गॉट 149, डबल हो गए, 149 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। एंड हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 50 मोर वी विल डू, और उसका एम सिर्फ यही है कि हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करें ताकि एक अफोर्डेबल चीज़ बन जाए। जितनी वॉल्यूम होगी उतनी अच्छी होगी, और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में भारत की एयरलाइंस हैं जिन्होंने 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जी। हम स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम भी ला रहे हैं। हमने लोगों को कहा है कि आप छोटा एयरक्राफ्ट चलाना चाहता है उसको चलाएं, चाहे उसको एयर टैक्सी के तौर पे चलाएं, चाहे उसको छोटे डिस्टेंसेस के लिए चलाएं ताकि आप स्पोक्स को हब से कनेक्ट कर सकें। हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ताकि पहाड़ी इलाकों के अंदर और हेलीकॉप्टर्स चल सकें। एम ये है कि जो सुविधा पहले सिर्फ ये कहना चाहिए कि संपन्न लोगों के पास थी, वो नीचे के लोगों तक पहुंचे। और मानकर चलिए, एक बार जब आम आदमी उड़ लेता है उसका मन उसके बाद रोड पे चलने को नहीं करता। ये बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये बात सही है कि अब एक बार आप फ्लाइट से ट्रैवल करने लगते हैं, आपको पता है कि समय कम लगता है, बड़ी अच्छी यात्रा होती है। लेकिन एक दूसरी बड़ी समस्या है आम आदमी के साथ में, वो है हवाई किराए की। मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने खबर देखी, चलिए गुलमर्ग में बर्फ़बारी हो रही है, क्यों ना एक काम करते हैं, फ्राइडे शाम को चलते हैं गुलमर्ग, संडे शाम को वापस आ जाएंगे, एक वीकेंड। और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि, और वित्त मंत्री जी ने भी पिछले बजट में कहा देखो अपना देश। मैंने कहा चलो देश देखने चलते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास का मुंबई से श्रीनगर का आने जाने का किराया 70,000 रुपये देखकर मेरी हिम्मत नहीं। किराए अभी भी बहुत महंगे, सुविधाएं कम हैं, किराए महंगे। ऐसे में अगर हम चाहे तो भी अपना देश नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, सारा का सारा जैसे इकोनॉमी में कहते हैं सप्लाई और डिमांड का मामला है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुल्लू छोटा रनवे है, ATR 72 अगर जाएगा लोड पेनल्टी के साथ जाएगा, इसलिए हमको ATR 42 खरीदना पड़ा, 35-40 पैसेंजर उसमें जा सके। अगर आप एक ही फ्लाइट करोगे, आपके पास डिमांड इतनी है, और जो हर एयरलाइन जो होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सब एल्गोरिदम के ऊपर काम करते हैं। उनका जो कंप्यूटर है वो देखता है इतनी डिमांड आई, किराया बढ़ जाता अपने आप, उनको पता भी नहीं चलता। वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर उनका, और जो टिकटिंग ऑफिसेज हैं उतना किराया चार्ज करने लगते हैं। ये एक समस्या है, और हमारा सोच यही है हमारी,
जब हमारे पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट होंगे, जब छोटे एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, कोई भी उसको चलाना, आप चलाना चाहे आप चला सकते हैं, हम तो वी वेलकम एवरीबडी। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, ही कैन स्टार्ट अ स्मॉल एयरक्राफ्ट एयरलाइन। अपने आप चीज़ें नीचे आएंगी। देखिए एक मारवाड़ी बिजनेस मॉडल होता है। जी जी जी। कोई मारवाड़ी तो नहीं है? मैं खुद हूँ सर, है आपके सामने इधर ही। बहुत अच्छा मॉडल है। मैं ही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा मॉडल। और मॉडल क्या है कि आप पहले जब सामान देना शुरू करते हैं, आप बहुत अफोर्डेबल रेट पर देते हैं। आप ये भी कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, आज पैसे नहीं है कल दे देना, और खाते के अंदर लिखते हैं कोई उसका कोई फॉर्मल वो नहीं है। धीरे धीरे वो आदमी आपका पक्का कस्टमर बन जाता है। उसके बाद जब आप प्राइसेस को उठाते हैं तो शायद उसको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो ये एक हमारे सिस्टम में तभी आएगा जब हमारे पास ज़्यादा हवाई जहाज होंगे, जब और हम इतना इसको कॉम्पिटिटिव बना दें, तब जाकर होगा। तो मैं वही मेरा सवाल वही था। वैसे आपने जो मारवाड़ी की बात की सर, मैं आपके सामने वो कहावत सुनी होगी, करेला और नीम चढ़ा। मैं मारवाड़ी भी हूँ, ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, जो कॉस्टिंग के मामले में कुछ ज़्यादा ही पकड़े। हम कब बनाएंगे ये सारे एयरक्राफ्ट, हज़ार एयरक्राफ्ट जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, यहाँ पे बनाने का कुछ प्लान है? बिल्कुल, आज ही हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। आज ही ओके। एयरबस और डायनामेटिक्स नाम की एक कंपनी है जो कि बेंगलोर के अंदर है। वो काफ़ी समय से एरोस्पेस के उसमें सेक्टर में है। अब एयरबस 220 के लिए जितने भी उनके डोर्स बनते हैं, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, जितने भी डोर्स बनते हैं, चाहे कार्गो का हो, चाहे पायलट के एग्जिट के लिए हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे अंदर जाने के लिए हो, सारे के सारे डोर्स इंडिया में बनेंगे। आज भी एयरबस का बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में बनते हैं। ये एक इकोसिस्टम है। और ये मैं कहूँगा कि जैसे मैं मारवाड़ी मॉडल की बात कर रहा हूँ, वैसे एक मारुति मॉडल है। ओके। मारुति मॉडल क्या है कि जब शुरू में मारुति आई थी तो नॉकडाउन किट था, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी थी, लोग बाग जोड़ते थे, आपकी कार तैयार हो जाती थी, हम कहते थे सबसे अच्छी कार है। धीरे धीरे आपने उसके एंसिलरीज बनाने शुरू किए, और एंसिलरीज की बिजनेस आपकी ऐसी हुई कि कोई भी आज ऑटोमोबाइल दुनिया की हो, उसके पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं। बल्कि गाजियाबाद के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री है, मेरे ख्याल से इस हॉल के बराबर होगी। दुनिया की कोई कार ऐसी नहीं है जिसको वो पार्ट्स ना देते, वेदर इट इज़ मर्सिडीज, वेदर इट इज़ BMW, कोई भी आप कार ले लीजिए। तो ये जब इकोसिस्टम बना, तब जाकर आज हम तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगी। आपका टाटाज का जो 295 जो बन रहा है, जो कि वडोदरा के अंदर जिसके लिए जगह दी गई है, उसके ऊपर काम शुरू है। एक बार जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप उसको कैचअप कर सकते हैं जी। और ये जो मैं देख रहा हूँ एरोस्पेस सेक्टर के अंदर बहुत जगह है हमारे आगे बढ़ने की, और हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो इस सेक्टर के अंदर आएंगे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे, जो मैंने सुना है, देखा तो नहीं, सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत काम करवाते हैं। उनके साथ काम करना आर्मी चीफ रहने के बाद कितनी बड़ी चुनौती रही? और दूसरा, आप तो खैर मानती होंगे, देश में ज़्यादातर लोग मानते कि मोदी 3.0 होने वाला है, तीसरी बार भी आपकी सरकार आ रही है, और शायद आप फिर से यही मंत्री रहे, कुछ और हों, जो भी हो। अगले कार्यकाल के लिए आपने भविष्य का रोड मैप क्या तय किया? मेरे ख्याल से ये शायद सवाल पूछ ले, वरना मैं पहला जर्नलिस्ट होऊंगा कि अगले 5 साल आप क्या करेंगे? नहीं, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि देखिए, जो खुद काम करता है वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता काम करता। कम से कम फौज में तो हमने यही सीखा था जी। तो हमें कोई नई चीज़ नहीं दिखाई देती। फौज के अंदर भी कभी संडे और सैटरडे की बात नहीं की हमने, अब भी नहीं करते हैं। तो लेकिन जो लोग शायद पहले ना करते हों काम, उनके लिए लगता है कि वो काम ज़्यादा है, क्योंकि शैली उनकी अलग है और हर एक चीज़ टाइम बाउंड है।
और मेरा अपना मानना है कि जब तक चीज़ें टाइम बाउंड नहीं होंगी तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा, और जब तक आप उसको सुपरवाइज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। और मोदी जी की एक खासियत है, हर काम के ऊपर सुपरविजन। वो 24 घंटे में से कैसे टाइम निकालते मुझे नहीं पता, लेकिन हर चीज़ जो है, चाहे रोड बन रही हो, चाहे रेल कॉरिडोर्स का काम हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ का काम हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर वो मॉनिटर करते हैं। उससे अच्छाई ये है कि चीज़ें टाइम पर होती हैं, देश के लिए अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का जो बजट रखा गया है, और ये इसको मैं कहूँगा कि ये एस्पिरेशनल बजट है। ये बजट जो है वो लोक लुभावन नहीं है, जो कि आमतौर पर लास्ट इलेक्शन से पहले होता है कि जी ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी, वो नहीं है। इस बजट के अंदर आगे आने वाले कल की जो चीज़ करनी है उसको देखकर बनाया गया है, और इसलिए आगे आने वाले समय में काम और होगा, देश और मजबूत होगा, देश का और विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Of course, a very insightful chat there, and thank you so much to our guest of honor for the evening. That was General V.K. Singh, Honorable Minister of State for Road Transport, Highways and Civil Aviation. Pleasure to have him here with us. For our next keynote, let's hear what Mr. Prashant Khemka, CFA, founder and managing director, White Oak Capital Management, has to say about the outlook of the Indian economy and how India emerged as a bright spot for investors around the world amidst the geopolitical crisis. Let's take a look. जो आज की तारीख में अगर आपने आगे की तरफ देखे तो जो आउटलुक है भारत की इकोनॉमी के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और शेयर बाजार के लिए, तो वो आज काफ़ी तंदुरुस्त लग रहा है। मैक्रो इकोनॉमी आप अगर बात कीजिए तो दुनिया भर की अनेक, विश्व भर की अनेक इकोनॉमीज में, कंट्रीज में भारत की आर्थिक परिस्थिति आज सबसे मजबूत गिनी जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही 6-7% का जो सबसे आगे, पर अगर आप दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैक्टर्स देखिए आप, जैसे इन्फ्लेशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है, ये सभी एक अच्छे संतुलन में है। अभी अंतरिम बजट पेश किया गया, उसमें फिस्कल डेफिसिट एक बहुत पॉजिटिव सरप्राइज था, 5.1%। उसके वजह से जो करेंसी पे भी इन्फ्लुएंस होता है वो भी पॉजिटिव रहता है, और आपने देखा है पिछले कई सालों में करेंसी काफी स्टेबल रही है इंडिया की कंपेयर टू दूसरे इमर्जिंग या इवन डेवलप मार्केट करेंसीज में इंडिया की करेंसी काफी स्टेबल रही है। तो इन सब के चलते, प्लस बहुत इंपॉर्टेंटली जियोपॉलिटिकली जो इंडिया का आज सिचुएशन है, इंडिया को सेफ हेवन माना जा रहा है, और जो पहले कभी कई दशकों में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कंपेयर टू चाइना हो या यूरोप हो, रूस यूक्रेन के वॉर के चलते, चाइना ताइवान के टेंशन के चलते, वहाँ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच टेंशन हमेशा जारी रहता है, तो इन सब मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है पता है, तो इन सब के चलते आज इंडिया जियोपॉलिटिकली एक सेफ हेवन भी समझा जा रहा है, जहाँ पे ग्लोबल फॉर्च्यून 500, फॉर्च्यून 2000 कंपनीज जो है एक सेफ्टी महसूस करती है अपने सप्लाई चेन्स को एस्टैब्लिश करने, जो चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक जो मुहिम चली हुई है दुनिया भर की कंपनीज में, तो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव में उभर रहा है, और बड़ी से बड़ी कंपनियों से लेके छोटी से छोटी कंपनियां भी विश्व भर से इंडिया में प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर रही है। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्ट्रांग है, आर्थिक सिचुएशन स्ट्रांग है, इसके चलते कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी पिछले कई सालों से आप देखिए 3-4 साल से कोविड के तुरंत बाद से लेकर आप चलिए तो 20% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, जो किसी भी बड़ी इकोनॉमी में दुनिया में देखने को नहीं मिला है। तो जो इन्वेस्टर्स है ये सबको लेकर काफी
आकर्षित है इंडिया की तरफ, काफी प्रभावित है इंडिया के परफॉर्मेंस को लेके, और आज इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एकदम नंबर 1 लेवल पे है दुनिया भर के निवेशकों के लिए। एंड आने वाले कई महीनों में जो हमें आज दिखाई दे रहा है, जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट है इंक्वायरी लेवल से, उससे जो आज हमें अंदाजा हो रहा है वो यही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ्लोस का माहौल रहेगा थ्रू आउट द ईयर। आज थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है इन्वेस्टर्स तो निवेशकों में, तो वो इलेक्शन को लेकर है। मई के कुछ अभी 3 महीने बाकी है इलेक्शन को, 4 महीने जो बाकी है। हालांकि ज्यादातर निवेशक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर के स्टेट रिजल्ट्स के बाद में कि देयर विल बी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, बट फिर भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने की वजह से कई निवेशकों को ये वेट एंड वॉच करके फिर इसके रिजल्ट परिणाम आने के बाद में निवेश करना है। तो जैसे ही ये इलेक्शंस खत्म हो गए, वैसे ही हमारा ये अंदाज है कि जो ये साइडलाइंस पर बैठे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो आज पॉजिटिव बहुत है कंट्री का जो आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से, बट ये एक इवेंट को लेके जो होल्ड ऑफ कर रहे हैं वो भी ट्रिगर पुल करेंगे। तो एक बाढ़ की तरह फॉरेन इनफ्लो का जो ये माहौल है, जो क्वांटम है, वो बिल्ड होगा राइट आफ्टर इलेक्शंस। एंड ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फ्लो है, सेविंग्स का जो चैनलाइज हुआ है इक्विटी मार्केट्स में, वो कंटिन्यू नजर आता है हमें। तो उस तरफ से भी कुछ डर नहीं लग रहा मार्केट के लिए। सो सेफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटलुक, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कंटिन्यूइंग द मोमेंटम जो पिछले 3 साल से बना हुआ है, और निवेशकों की भारत के प्रति जो रुचि बिल्ड हो रही है, उन सबसे ये साल रोबस्ट लग रहा है। लो डबल डिजिट रिटर्न्स, ऑब्वियसली मार्केट बहुत ये सब चीज मार्केट ने नजरअंदाज नहीं की है, इसलिए मार्केट भी काफी पिछले 12 महीनों में स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है मार्केट ने। तो यहाँ से लो डबल डिजिट रिटर्न 10 से 12% रिटर्न हमारे टीम की धारणा है अगले 12 महीने में निवेशकों को मार्केट डिलीवर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं. When we talk about India's growth, how can we not talk about the fintech sector? Our next discussion takes a closer look at the financial products marketplace. Yes, and from current trends to past trends which are breathing new life, let's discuss financial products marketplace, how it has evolved over the years. Maybe please call on stage Mr. Vikram Chandra and Adarsh Shetty, CEO, Bank Bazaar, with a huge round of applause for this next session. Well, it's great to be talking to you, Adil, and you know the fintech sector, Bank Bazaar in specific, and the fintech sector in general, has of course been the sort of poster child for a lot of what's been happening in India: UPI, digital transformation, and fintech. Perhaps not the best of times right now, though. The last week, 10 days, recent events, have they shaken the industry at all, or is it par for the course? What's happened with Paytm? So I think the RBI governor said this very well when he was talking about the risk-weight average change. So that was the industry-wide event which everyone thought was surprising. He said we have to do things which will set us on a course for success for 20 years. So we're not going to be measured by what happens this year or this quarter. As long as we make the choices which will keep the Indian market growing, the Indian consumer growing over the next 20 years, we'd have done well. So I think in the long run, it's a great space. Indian consumers are getting more and more savvy. Data is becoming more and more available. And like the earlier speakers said, India has tremendous strengths in new age technology. So I'm very excited for the next 10 years. Just talking about that technology, now many countries in the world do have
good financial tech led by private companies. They're private companies, they have some good financial tech, and they put it out there in the market. India is a bit unique, and there's a great opportunity in that you've got all of that riding on public infrastructure, UPI and the India stack and the things that can be enabled. Do you see that as a major competitive advantage? It is a major competitive advantage, right? Because let's say in the US, I wanted to sign a contract. I go to a private company like DocuSign, I pay them, and then I can use their product. In India, we use Aadhaar e-sign. You know, it's relatively very, very low cost. It's built on government infrastructure, and it's available for almost free. Like e-sign, we also have video KYC, we have UPI, and I think what's very exciting, Vikram, is imagine if we could do the same thing for artificial intelligence. So if I have to today get access to anonymized data anywhere in the world, I have to build it, right? I've got to be a Meta, I've got to be a Google. But in India, if we create secure and anonymized architecture where we can build world-class AI systems, it's an incredible opportunity. And digital public goods is what the rest of the world is now looking at India, saying, you girls and you guys did it right. How can we learn from you? So it's incredible how we actually leapfrog, right? What's happening in America and what's happening in Europe today. So obviously that's great for the Indian consumer, it's great for the Indian market. Does it in any way make it more difficult for an individual private company? Because two things. One, you can't really go out and build IP around certain aspects of that technology because it's public, it's available to everything. And a second aspect of it is tougher to build a moat because anyone can tomorrow come and ride on UPI and e-sign and Aadhaar to do some crazy stuff. Great question, right? So think of it as digital infra. So when the finance minister said 11.1 lakh crore, that goes into digital infra also. Now your differentiation has to be on top of that. So are you going to be better because your roads are better or because your airports are better? No, because that's available to everyone. But what do you build on top? Are you offering that consumer benefit, that better pricing, that instant checkout? Is your product more relevant that rather than going to 10 large existing lenders or banks, they're willing to work with a fintech partnered with a bank? So the innovation goes one level above into consumer experience. Is it only innovation or does it then become also a question of network effects that a lot of people are offering relatively simple thing, it becomes top of the mind recall, whom do you remember, who's got the biggest brand name, which means you've then got to spend those marketing dollars or marketing rupees to actually get top of the mind recall. So I think it's a combination of things, right? And what the public markets are now telling companies, and you asked earlier a great question, saying if there's a winter in private markets, what the public market is saying is that they want to see profit, right? And you're not going to get profit by burning up a ton of money, doing a ton of things. So I think a lot of digital companies are getting smart to the fact that they need to keep their fixed costs tight. They need to keep their margins high. They really need to focus on building both network effects and innovation, which will cut the cost of delivery, so that it doesn't matter if you're in a metro city, you're in tier 1, tier 2, but the same Aadhaar e-sign has to work in a village in India on the mobile phone. The same video KYC. Like think of video KYC, right? So 2 years ago, or pre-COVID, an officer had to come to your house to pick up your PAN card, your Aadhaar card, and an officer every month would do 70 cases. So I could go to 70 homes, 3 a day, and pick up documents. Now with video KYC, the same officer sits in Delhi, but does 700 video KYCs a month. So it's 10x productivity, and the same officer is working across 1,000 locations, because you're sitting in one location, people are using their phone, bandwidth is cheapest in India in the world, and you finish a video KYC authentication and the account is opened or the home loan is dispersed. So it's amazing how much leverage technology can give India. So who would be, for a company like yours, which is like a marketplace, what would you say is your biggest competitor? Would it be somebody, other marketplaces, other people who are trying to give a range of different products? Or potentially could your competitor just become a bank, right? A ICICI bank or a HDFC, which suddenly says, we're going to do technology better and we're going to innovate and we have good brand recall. So we'll directly go to the customer and we will not
we won't offer the choice that perhaps you'd get in a bank bazaar? See, great question. I think the first thing that's really interesting, and you called this out earlier, is less than 3% of India has a home loan or a credit card. So there's so much opportunity to grow that there's enough space for everyone. Now, I think our competitor at Bank Bazaar is that traditionally a credit product is offered to you by your bank. So whoever you have your salary account with will give you a credit card, will give you a home loan. But very often, right, the bank you bank with, there are 52 banks out there who might have a better offer for you. I think what UPI has done, what Aadhaar has done, what Video KYC has done, what Account Aggregator has done, is it said it's a level playing field. The consumer is queen or king. I can share my data with any of these 52 in partnership with a fintech. And whoever gives me the best product, the easiest product, the most relevant product, I'll take it. So we're competing with the offline traditional way of thinking. But without changing that, Vikram, how can we truly leapfrog and get to where we need to go? So is it also perhaps the case, coming back to the point you were making about only 3% of people are using some of these products, paradoxically, the more competition there is, the maybe better for you, because if everyone starts using credit cards and everyone starts using bank loans and everyone gets health insurance, actually the opportunity is so much there. So if the pond becomes bigger and bigger, it doesn't matter how large you specifically are. It's interesting, right? Because people sometimes say, hey, UPI is now 12 lakh crores last year. Credit cards, right, is 12 lakh crores a month, sorry, and credit card is 1 lakh crore a month. What is the opportunity in credit card when UPI is growing at a 60% CAGR? But very interestingly, India is the world's largest and fastest growing market for credit card. We've been growing at 25% spends increase for the last 5 years. India is a market where everyone is rushing to. So the incredible opportunity is there's space for every kind of technology. As long as you find relevance to the Indian consumer, I think UPI will grow and credit cards will grow and home loans will grow and personal loans will grow. Looking at some of the challenges and the problems, the first question, of course, comes around, regulation. In the past, it's often happened, especially in the fintech space, regulation changes, things are not done correct, it can throw things off. As I began by asking the question about Paytm and everything that's happened out there and was KYC correct or not. Does that shake confidence in you or other people, or does it give you a sort of a set of things to say, well, we better be careful not to do X, Y, Z? So I think we should pull out and look at the last few years, right? And I think a new process has now started with policy making. So a very, very big foundational change which happened is when digital lending rules and guidelines came out, essentially to clamp down on predatory lending. Now, the way it happened, right, is the RBI put out a consultation paper. All the industry bodies, all the fintechs responded with comments on that. Then they met everyone, and then the draft law came out, and then it got notified. I think at the end of the day, we can't take a unique case and make a call, right? I think the trend has been that for India to succeed, the digital economy has to grow. Digital public goods has to grow. I think no one doubts it. In the finance minister's budget speech, she used the word fintech repeatedly. It happened last year too. So I think the digital economy will grow. I think the consultative process is the right way to go. What the regulators are now thinking about is self-regulatory organization. Because everyone's got the sense that innovation is moving so fast that it's very hard for someone to regulate AI sitting so far away from the industry. So they're trying to create self-regulatory bodies where the industry players come together as a group, not as individuals. They then work in a consultative regulatory policy-making framework where I put out a draft, the regulator puts out a draft, industry responds, then the final law comes out. I'm very positive, right, that directionally we're moving in absolutely the right direction, thanks to the Reserve Bank of India, thanks to the Ministry of Finance. There is a consultative process going on. When you look at the specific challenges then around things like KYC or getting to know, a lot of people don't have documentation. The documentation has not been clear. India has been a market where a lot of things were happening under the table. Now it's being organized. Data is being procured.
The IT department now has a lot of information, a lot of people. So the more it formalizes, the better it is, the easier it is, and the easier it becomes for fintech. How far on that process towards formalization do you think we are getting? A lot of your clients are saying, yeah, we do have documents now. Yes, so we have made great strides. So first we have to give credit to the industry for that. Like I said, a bank officer who used to do 70 KYCs a month, today with video KYC is doing 700. I think that is a significant leap forward for India. I think the mutual fund industry has done something brilliant, right? Today you do one KYC for one AUM, for one AMC, and everyone has it, right? I think other industries can learn from that. I think right now, there are things that are being worked on. For example, we have a great tech called DigiLocker. So DigiLocker has 180 million Indians who can store up to 400 document types each. So your driver's license is available there. Potentially your university certificates are available there. Now, one of the projects being worked on is income tax needs to integrate with DigiLocker. Because today your Form 26AS, your TDS is not available. Your EPAN is not available. So I think the industry is constantly engaging with the ministry, with the regulators, saying, hey, we're working on the ground. There are people who don't have A, B, or C. Can we help them out, right? Hopefully every quarter, we're going to see some improvement come in. All right. Privacy concerns in all of this, or no? The more data you have, the better it is. No, we need to keep constantly learning, right? We every day, whether it's in Because security. privacy also leads to cybersecurity and cyber theft issues. If all of this information is very easily available to a lot of people, they are going to be bad actors who are going to misuse it. Yeah, so like the previous panelist said, we have to be on our toes and we have to constantly keep learning. See, the DPDP privacy law has been notified. So there is a standing law as we speak. There are certain rules which are now expected. The law in itself is taken into account all global best practices. So it says the consumer is the principal. The consumer has the right to take away permission. The consumer should be told what her data will be used for. So I think we need to start making sure the law is applied, is enforced, everyone follows it. Same thing with InfoSec, right? There's great technology out there. Every day the challenge changes. The minute we feel we have learned everything, I think something will go wrong. Continuously we need to assess, improve and learn from our mistakes. Looking at the biggest untapped segments of the market, right? UPI is there, people are making payments, credit cards growing very fast. You used a phrase, predatory loans, a short while back. Is that one of the options? Because it's often been said in India for as long as I can remember that, hey, isn't it crazy that, you know, if you're really rich, you can get a loan for you can get a car loan for 7, 8%, 10%, 12%. But if you're a farmer wanting to get loans, you can't, and microcredit. But is that the sort of a thing where technology can help in providing easier access to capital? Yeah, so, you know, we need to do things which are sustainable. So we can do something that is predatory. It'll grow very fast, very soon, but then something will go off the rails. Everyone knows what happened with predatory lending in China. Grew very big and then one day completely shut down. I think the nice thing about tech, right, and I think Mr. Nilekani says this very well. It's the exact same UPI, the exact same Aadhaar, the exact same video KYC that's operating in, you know, the biggest private office in Mumbai and in, you know, the tier 3 town when someone is opening a bank account. So the technology we're building, right, we think it is for the super smart, but today everyone in India is comfortable with video. There's no one who doesn't do a video call in India, right? Everyone today has an Aadhaar. Everyone today is comfortable with UPI. I think the question we need to ask ourselves is, we are a world leader in digital payment. And a very simple metric, right, is we have over 10 billion digital payments in India every month. That's more than US, UK, China, Japan combined. But can we now do this for other financial products? What we've done for digital payments, can we do it for credit? Can we do it for mutual funds? Can we do it for insurance? Because if we are able to, right, I think we'll truly leapfrog the Western markets. But these are also obvious areas where, for example, AI can be used. When you have that much data and you can train the models on that much data, then, for example, it should be
not too challenging for someone, you for example, to build a model that will be able to say, this person is safe. Give a loan to this person is safe, this person is not going to default, right? The credit score, in other words, that we're talking about, to the power of 10, where you can really predict fairly accurately that this person will not default. And that can be extended. Then you can use AI for the government to predict that this person is probably not defaulting on his tax and this person probably is. I'm sure they're doing that today. So they probably are. They probably are, but getting it wrong once in a while. So yeah, absolutely. So I think here's the exciting thing about AI. ChatGPT came out November of 2022. So ChatGPT is literally 1 year and 4 months old. It's an incredible opportunity. We're at the nascency of how AI is going to be adopted by business, whether it's a news channel, whether it's a government office, whether it's a fintech. It's an incredible opportunity where we have access to the same tools that anyone in the world has. Now the question is, how do we build on top of it? Because I think to build the foundational statistical model, that's a tough game, and that's an advanced game which is already, takes a lot of capex to run. But how do we take these tools and build high quality processes such that we're able to cut cost, increase reach, increase quality? That could differentiate India over the next decade. If we get the right rules, the right policies, and the right safety nets in place, AI can fundamentally take India into a different growth orbit. I've spent the entire evening asking people to look ahead to 2030. So as you look ahead to the Bank Bazaar experience in 2030, is it fundamentally going to be, you're going to put on a helmet and you're going to be speaking to an AI entity and saying, I need a loan, help me get it, and that person does everything for you? So I think... Or you say you can already do that with the web. It's coming out not 2030, but 2 months from now. See, putting on a headset and being able to think something and us being able to read it... okay, Vision Pro, Apple Vision Pro, that's all. Right. So here's the thing. I think every quarter things are changing. When I started as a fintech entrepreneur 15 years ago, and what's happening today, it's completely different. And what I've realized is the only way to stay relevant is to keep learning, right? We didn't even know something like ChatGPT existed till about 15 months ago. We didn't know video KYC was possible till the RBI allowed it during COVID. I think every year things are coming out. I think there are new experiences, new way of thinking. It's very hard for me to predict or visualize what 2030 will look like. But I know that unless we keep learning, right, 3 years from now, we're not going to be relevant. So what we encourage ourselves to do is say that, hey, what is happening out there? Learn from your competition. Learn from, all the great tools available out there. Today, right, you can listen in on your news channel, thought leaders coming and speaking about how we should be thinking. So I think it's a brilliant opportunity to stay abreast, but where we'll be in 2030 remains to be seen. And I'm going to just pick up from that one line and leave that as a thought for everybody. Perhaps that's the one thought you should keep in your mind at events like this or generally in life. If you don't keep learning, 3 years from now, you will not be relevant. That's something to reflect on and something to project forward. Thank you so much, Adil, for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for this session. Vikram sir, we'll let you be for now. You can take a little break and we'll move to the next one. As of now, our next panel discussion is on consumption in the digital age. And of course, this one, Swati, is closer to home. We've seen the shifting trends of how people, have consumed media in India. The shift to digital has been very, very evident. Yes, and to discuss the shifting trends in this digital age and the roles played by the media and advertising in digital consumption, now may we please call on stage our next panel, Mr. Rajiv Dubey, Senior General Manager and Head of Media, Dabur India, Mr. Mohit Joshi, CEO, Havas Media Network India, Mr. Naveen Khemka, CEO, South Asia Essence Mediacom, Mr. Santosh Kumar, COO, Innocean India. And this session will be moderated by Mr. Vikram Sakhuja, Group CEO, Madison Media and OOH, Madison World.
Welcome on stage, gentlemen. Over to you. Thank you so much. In this entire Insights conference that we're having today, this is the advertising and marketing panel from what I can make out. The issue that we are really exploring today is consumption. And we are trying to see that in the digital age, there's been a lot of change which has happened in advertising and media thanks to digital. What has that change been and how exactly has it impacted consumption or consumerism? So we've already introduced, the panel has been introduced. It's a very, very eminent panel here. So I will not, we have about half an hour, so I want to dive straight into it. Now, from the old days of branding, when there was good old broadcast, TV, print, radio, outdoor, cinema, all that, the big thing about digital has been this, clearly there's been a lot of change. Today in the entire ADEX of India, digital is about over 40%. It used to be nothing. TV and print were the big daddies, and now they're not. So digital has been right on top. What we are also seeing in the process is a new word called performance. Earlier there used to be marketing or advertising, but now that is called branding, and there's something called performance, which is all about short-term sales. Then there's also the entire full funnel kind of marketing that we can now do. There's something called top funnel, mid funnel, bottom funnel, and you can actually try to take a consumer and through his entire journey and try to target and get some results out of it and measure the ROI. Very, very exciting. There's also the entire ability from the earlier broadcast days where you just send the message out there, it would go to everybody. Now you can target in a very, very hyperlocal, very fine-tuned manner. And in all of this, we also have the entire programmatic and data piece, which is allowing you to build affinity and interest groups. Earlier, we could only do, say, demographic targeting, but now there are so many ways in which you can actually reach your message. So it's all been very exciting. And as you can see, 40% plus of the ADEX is there. But what exactly has been the impact on consumerism? With that, I'm going to first come in and see from the panel that has consumption increased or not? Look, we are not an economist panel, so we can't look at consumption from a standpoint of disposable income minus whatever savings, and that's the way we are going to be talking about consumption. No. This is going to be more from a standpoint of category growth, category development, things like that. And so over the last 7-8 years, when digital has really been coming, Rajiv, do you think what has been the exact boom or not in consumerism? So significant difference one has seen in last 4-5 years is that a lot of business has moved to online business. Like for example, a traditional company like ours, Dabur, which has been primarily been selling through 77 lakh outlets in the country, reaching out to almost 120, 140 crore people in the country. 10% of our business has moved to online business right now. So there's been a significant change in our business. And initially it came at the cost of modern trade, but that's a new business because we are able to launch new products in e-commerce, totally new, which is not a traditional products to Dabur. And the cost of doing business there is much lesser. That's a low-hanging fruit. You are able to target consumers who are already there shopping. So that's been a different story altogether for us. That's been low-hanging fruit. We've been targeting those people, and we have moved some monies over there. Now coming to consumption. Consumption per se at a country level, after COVID, one saw one spurt in consumption. 2-3 years were very good. Last few quarters has been slightly subdued because of the rural consumption has slowed down a bit. So the moment rural consumption goes up, you see much better numbers. However, we hope that next couple of quarters are going to be better. Great. So that's a cautious start, Santosh. Look, this is India's age. I mean, this is India's century, forget the decades. We're talking about a 7% growth this year also. It's been
reasonably steady. We also, the entire narrative is pro-India. Do you think, if I look at the ADEX is not going gangbusters. We expected 15 to 20% growth, it's going to be closer to 10. And even last year wasn't that great. What do you think? Is the entire positivity which is there in the larger macroeconomic sphere, is it showing up in consumption, consumerism overall? Yeah, so I have a little different perspective is there. So definitely there is a positive story around India's shining and growth and all. The consumption depends on the category to category. So in certain category, we have seen in some of our clients there where the consumption has really increased. So just to give an example that automobile has done the highest sales in January this year. Record sales across all companies, they have the highest growth there. So there is definitely a higher consumption that is happening. Similarly, if we see digital native categories, which is be it app-based businesses, ride-hailing businesses, fintech businesses, there has been a huge surge, huge consumption that's happening. The economics depends that how is the customer life cycle value is evolving around, because that's another way of looking at it is. So there we see that there is a significant increase. Maybe it is because of a disposable income, or maybe because of the changing landscape in the consumer consumption pattern that's happening. Third, I would say is post-COVID is kind of the revenge the consumers have. So that's where we have seen the growth in travel sector. The people are actually traveling more. If you see the airline prices, that has gone skyrocket, and then still airline occupancy has been increased a lot. Hospitality industry have seen a huge surge. So that's also is somewhere there, which is, it's very difficult to predict whether it will stay for longer, but at least it looks like that it will be there at least 1 or 2 years going forward. So I'm getting from you that there are some categories which are booming, and you've mentioned the ones which have been booming. So Naveen, would you sort of echo, or would you like to build on that? Is it across the growth kind of growth that we are getting, or is it only patchy or in some segments? Yeah. Whether it's categories or whether it's maybe demographic segments, pop strata, urban, rural, absolutely, high priced, low priced. No, I totally echo with Santosh what he said. Actually, if you see the ADEX, and which the point that you started, Vikram, the ADEX, the growth of ADEX and the share of digital on the ADEX growing at about 10-12%, while we were expecting 15 to 18%, which means two things. Because the ADEX is growing, it is because the sales are also growing, because there is a typical advertising to sales ratio that brands operate on. It's not that suddenly your A to S ratios will go up, right? So which means your sales are increasing, you're putting more money on media so that you are able to affect more sales. That's one. Second thing is the incremental ADEX is actually coming mostly on digital. The reason why the incremental ADEX is coming mostly on digital right now is because digital is also allowing more number of brands to start getting advertised, because the entry level cost on digital is far lower than the entry level cost on mass media to be able to do a campaign. So which means more number of brands are there. If you look at the number of advertisers, Vikram, what we saw 10 years back, the number of advertisers in India, and what we are seeing today, thanks to the 40% onslaught of digital, the number of advertisers actually 4x or 5x, which means the number of brands available for the consumer today is so much more to choose from. So today you have brands available in the mass market. Today you have brands available in the digital space. You have brands available only on Amazon and Flipkart. Today you have D2C brands available only on their own platforms. So yeah, just look at the way today the market is evolving, and how so many more brands are getting wings to fly. And yeah, I would say... I think that's a great point you're raising, Naveen, because with digital, the entire SMB, MSME... Absolutely. That, I think we've got about 4 lakh new advertisers who've come in, which is more than all of TV, print, radio, everything put together. So all of them, we've actually got definitely more marketers or advertisers come in. But Mohit,
Why is it that despite all of that, we're still at 0.3% of GDP, as ADEX is about 0.3% of GDP, and that seems to be one flat number which has been over the last 10 years? Hello. Yes, I agree with you, Vikram. I think I agree with all the points that these guys have been saying. The growths have been there in some of the sectors, and being his agency, I can vouch for that. However, I think it's the benchmark of the GDP, the ADEX to the GDP that is really, really low. I'll give you another analogy. If you look at the CPTs that we have in India, on television, compared to all the other markets, they are traditionally so low, right? And any amount of effort that you would do, the comparison I'm saying, CPTs of the TV versus that of other media, right? There is a huge difference in India because classically the benchmarks have been low. I think those benchmarks of ADEX to GDP, or for that matter, A to S to some extent, have been low in India. And I think that's just continuing. And unfortunately, COVID allowed all the advertisers, or made all the advertisers conserve monies at that point in time. And after COVID, once the advertisers have come back, maybe this was your second question, but the way they are using media has changed significantly. It's become more digital, right? And it's become more performance based. So I think classically the A to S in India are lower than that of the West. Also, the GDP, the ADEX as a percentage of GDP has always been low, as you rightly said, and it's a flat thing. It's not possible for it to jump in a specific year. And unfortunately, because of COVID, even if it would have gone up, that situation did not happen. So in the first sort of round that we've done, the sense I'm getting is that there is growth, it's patchy, it's in parts. Digital is definitely bringing in more advertisers, but somehow the tsunami of advertising, and because of that, the growth in consumption probably hasn't happened, but it is still a little muted, but it's probably in the right direction. So now let's move to the to the heart of it, which is role of advertising and media in a digital world. So, let me start this time with Santosh. Fundamentally, do you think advertising has changed? Now, we're talking about from a creative messaging standpoint. From the time, like maybe 10, 15 years back, the kind of ads that were made and the kind of ads that are made now, has there been a fundamental difference in the digital age? 5 seconds, 10 seconds, 2 seconds, and skip button, performance, buy me or else. What is your 30,000 feet picture on the quality of advertising, which is, has it undergone a change? Okay, so I have a 30,000 view also, and I have a 3 feet view as well, because I am the part of the journey where the digital was tiny, and I was among the very few people in India where we started digital, and we were part of the larger ATL team trying to find a space to put some banners on the website or something there. From that place, we have covered the journey of 20 years where we are seeing that digital has surpassed the overall other medium spends collectively. Now, so definitely there has been a significant, I would say, a paradigm shift in the creative messaging, or the way of communication has been done, where the earlier stage was where there was a huge emphasis on the communication, on the copy, on the artwork, that comes through a lot of checks and balances to see that the communication is fitting with the brand tonality or values or something is there. Where today it's a very moment of truth advertising. And here that time doesn't permit to have that kind of a sanity checks, that kind of a deep diving and all. And actually that content is so perishable. It has such a short life that it has to be tactical, topical, and apt in the context. So that is the game changer is there. So there has been a very small, snackable, relatable content has started coming. It is not, the advertising format has also changed. It is not very
film related, but it is also about how we are relating it to an event or to a kind of some sort of incidences or topicalities. Second is also it is the influencer marketing, which is a different way of producing content altogether. So there has been a mix of lot of different types of format that has come, and that purely depends on the attention span, which is getting down every year. So this year, the latest news is coming, it's coming down to less than 4 seconds. Now, so advertiser is struggling that what they can write or tell to the consumer that it can reduce, it can be noticed in that 4 seconds is there. So the answer lies in that, the contextuality. So let's take that to Mr. Dubey. Yeah. If you can build on what Santosh said and said, do you think this entire challenge of having to say what you want to say in very little time, how are you as a marketer addressing that? And while you're talking about that, do you feel there has been a change from building brand love to more selling? Buy me now, sales, transaction, and is that good or is that bad? So first of all, let me talk about attention economy, So, goldfish has an attention span or say memory of 8 seconds, I guess, right? Humans have become even worse than that, right? So your attention span is when your finger is at the bottom of the phone till the top of the phone, when it's scrolling up. So that's the attention span. 4 seconds is what he said, Santosh. Probably less than that, So, and you have to say everything. So in that 4 seconds, in those 4 seconds. So if that is the case, then you have to have advertising which is suited for those 4 seconds. Whereas... Have you adapted to that? So that's one part of spectrum. That is, I think I would say, bottom of the funnel. But the moment you go to top of the funnel, you still have to advertise. You have to still build the brand love. You have to still build the brands. Brands are not built just by doing this kind of advertising. So for that, you have to go mass. You have to buy sports. You have to be present on a mass medium and not target so sharp. Like companies like us, although we target in our own way to our consumers, but everybody is a consumer for our products. So if everybody is consumer for your products, then you have to go to top of the funnel. You have to address that as well and build the brand love. You can't just do bottom of the funnel advertising or just cater to one segment of people. Although you're getting business there, but that business is for a short term. You can't sustain your business forever with that. You still have to build your brands. So let me put you on the spot. In terms of driving long-term consumption growth, consumerism, is branding or building brand love or the basic brand proposition, does that work more in the long term or building short-term sales? And it's an either-or answer. And you can't answer by saying both and balance. Long-term, which one would you say has a higher role to play? Long-term, obviously, building brand love will always work for you because that will go a long way. That'll create your brand. That'll set you apart from others. However, you can't ignore the ones who are there. Again, I'm saying that both. So, like in our business, almost 20% of that money is going towards performance right now. It's for those people. Otherwise, you lose out on that business. You don't intend to lose on those people as well. So you're doing both. You can't just do one and get away with it. So let me take a segue into that. 20 for performance and 80 for branding, I think is a pretty healthy one. Mohit, if you have to look at it, do you think when you look at across all the kind of brands and categories that you're working on, has the pendulum shifted more towards performance than is probably healthy? Or is it doing it just right? I would agree with you that the pendulum has significantly shifted towards performance because today clients are asking you to give an ROI of a television campaign as well, and we are doing that. However, at the same time, there is a need to build brand love, and probably the way to build brand love has changed. I don't think advertising can do that anymore. You need to associate yourself with the right tenets or the right domains to create brand love. And I'll just give you an example of one. I have my partner sitting over here. For Hyundai, we
we partnered with media partner, and we created a campaign called Samarth, which is the consciousness around creating infrastructure for differently abled people in India. Right. So, and Hyundai is taking that as a cause, and somewhere the cause-related marketing or the meaningful marketing also comes into play. I think those are the ways in which brands are creating brand love today, because we do not have the luxury of running, I would say, brand films the way it used to happen at the time of when we started our careers. We had a different budget for thematic films and different budget for promotional films. I think everything today is call to action, and hence brands are also looking at different ways of creating that connect with their consumers in through meaningful ways, and that is something that I see happening across brands through purposeful marketing, meaningful marketing, and associations. Okay, Naveen, Santosh alluded to the part about how when you're using certain kind of digital media, it's like the feed ones, it's all very fast. Let's talk about how consumer is consuming media right now. Do you think there's been a fundamental shift? Is it that people are still consuming everything, so TV, print, radio, and also digital? Or is it become a zero-sum game and people have dropped other mediums and only sort of moving to digital? No, of course. I think over the years, the time spent on media has really gone up. And obviously, if we consider mobile phone and social media also as a media choice now, so it's really gone up manifold. We are spending more time on whichever screen that we are on. That's one. However, the extent of the time that we are spending on each screen, it depends on which age group you belong to. So today, if you are a slightly more very younger audience, which we are calling possibly cord nevers, who've never seen TV in their lives, they're possibly, they are glued onto the screens the whole day, almost 5 to 6 hours in a day. And some of our kids are classic examples in this room, right? Who are spending so much of time on the mobile screen. However, the more you grow older, then you see that people still have the habit of going back to the good old television, also catching up on programming there. So let me just now, that was a lead-up question to basically reacting to Rajiv's point, the goldfish point. When you're seeing a feed, a social media feed, versus say sitting in a cinema and watching an ad where you are pretty much captive audience, shouldn't you be factoring for the attention that you're getting? And in the process, are some of the media, are you feeling that people are chasing eyeballs mindlessly without actually taking the attention quotient into account? Actually, Vikram, I have a different point of view there, but I understand what you're saying. Again, I would say today the way people are consuming media, and because people are so into that medium, so today if my creative choices are not platform first and creative first. So earlier what used to happen, we used to wait for the big creative idea, for the big creative agency to come and give the big creative idea and, come and present the big campaign. And then we used to all plan around that, right? And now things have changed. We are advising clients that don't think creative first, think platform first. So depending on which platform you want to advertise, depending on Facebook or Insta, or if you want to do in shorts, or if you want to do television, then you have to devise your creative strategy according to that. And it can be as attentive as television if you do it well. And I'll put the same, what you've led up to both Rajiv and to Santosh. Do you think, from your client standpoint, do you feel that agencies have learned the syntax of how to master creative on Twitter or X as different from Instagram, as different from Facebook, as different from YouTube? Or are we, in our old days when FM radio happened, we used to get sound edits of TV commercials. Right. That was ridiculous. But do you feel that people have mastered the syntax of all these different formats? No, I don't think so. Based on what he answers, you have to defend that. I don't think so. So agencies would still come to you and say that 90-second ad would work the best. And we have created several of them in the last 1 or 2 years. We created one film with Bachchan Saab and one with Nora Fateh last year. Those are like all 90 seconds film, and at the best we could run it on YouTube once, not second time, we didn't have money for that. But however, it's been very hard to tell them that, you have to create
brand love in 4 seconds, you know. It's been very hard. People learning, I mean, it's very hard learning for creative agencies. I mean, obviously, I mean, 4 seconds is a very... Yeah, absolutely, yeah. Okay. So I would see this in a very different perspective because, so when we are talking about a creative or a communication, I see the different lens that the brand love today is now dependent on the personalization. Personalization. Because personalization at scale is the key to grow further, because maybe I am at the medium where I spend 2 hours or 3 hours, which is maybe say Insta or a Facebook or anything else. Maybe he's at a medium where watching cinema or TV or something. So hence, it is not just one remedy or one solution that fits all, but it is a personalization that is more important for each of the audiences there. So that's where we create a lot of cuts. We create a lot of audience. I think you haven't responded to, I mean, Rajiv's frustration. He's saying that I'm getting a 90-second ad when I'm asking you to do I'm coming to that. I'm coming to that as there. So yes, there may be instances where Rajiv might facing this thing, but when today's I see that agencies are getting ready to not as an advertising agency, but as a wholesome customer experience companies. And that's where the shift is we are seeing, at least at my organization, I'm seeing those kind of a shift is there, where we are not looking at a 90-seconder or a 60-seconder, but we are looking at that how we can build that experiences for the customer is there. Now, across different touch points. And that requires a different formats, platform first, that requires a different pieces of communication altogether. So that is a mix of all the things there. And do you think creative talent today is skilled to handle the challenges of making creatives for different digital platforms? Yeah. I would say the answer is not a very clear yes or no, but the answer lies in that how we are using technology into it. So like, for example, the use of generative AI is going to bring that paradigm shift where creative folks doesn't have to be thinking across all the platform and the format. They can take this aid very well. We have done a couple of experimentations where we have seen that with a similar kind of a communication, the prompts and the script, we can actually create 1,000 different kind of formats or the creative communication with a different imagery altogether is there. So the creative tech has to be in the play. Got it. Okay, I think we are reaching towards the end of our timing. I think one of the most profound aspects of digital on advertising and media has been the so-called measurability. We said marketing funnel, the ability to see what every spot is doing in terms of engagement or action and stuff like that. If indeed this is true, that should increase the accountability of advertising or marketing spends, and therefore it should improve ROI. And if ROI is getting improved, then more investment should come. Why is that not happening? Mohit, firstly, do you think that we are in a situation today where we are better at answering ROI questions than we were 10 years back? Definitely we are better, but we still are not we still don't have all the ammunition that we need, you know. On digital, yes, everything is measurable, but the moment you look at multimedia communication, you really don't have, single measurability over there. You do market mix modeling, and basis that you try to convince clients that, which media is working best. But in terms of technology, yes, we are significantly better than what we used to be 5 years back. But I think there's a huge requirement even today, which we need to cover, for us to be going with complete confidence to the client, saying that this is working and this is not working. So, for example, you are okay saying that an influencer marketing program that I did got me 5 million reach with 4% engagement, but I still don't know whether that worked better or my ad. Absolutely. And still today you are doing, the attribution is happening to the last click unless you're, doing a market mix modeling. So there are challenges that we have. The biggest challenge is that you cannot go and convince a client that
a brand is spending an X amount of on digital, because digital is not being tracked the way mass media is being tracked. So there are challenges. I think it will take some time for it to get Naveen, settled. would you like to say that your observation on, are you seeing the marketing ROI discussion happening with clients? And are they now beginning to feel that if it's working, will they be spending more? Increasingly, sorry, I would say increasingly, yes, Vikram. This is a hot topic of discussion across all meetings nowadays. But I would say, I think David Ogilvy once said, right, 50% of my ads, the advertising spend is wasted, and I don't know which 50%. So I think as long as advertising is working for you and it is working for your brand, I think we should not get so much into the ROI part, and let it do its job and create iconic brands that we all love. So that I would say should be the key mantra. So great. I think Now, one yeah, important please. thing is that, you should continue to advertise. You should not hold back advertising. So if 50% or 100% doesn't matter, but you should continue to advertise. That's the only thing which will work. Amen to that. So I think we are reaching the end of our discussion. Right at the end, I'll just request each panelist to give their very succinct, a yes-no answer in terms of, so in the overall sum of things, what has been the impact of advertising and media in the digital age on consumption and consumerism? Has it increased, has it decreased, or remained same? So please don't, take a position and say it. And one thing that you'd like to see more of in the next year. So has it increased, decreased, or remained same for consumerism? And what would you like to see more? It has increased. Increased, okay. Yeah. So certainly it has increased. And how I foresee the coming time is when you mentioned about a branding versus performance and all, I would say is today the word has been coined that is called brandformance. Brandformance. Now, so brandformance is about a delicate balance and synergy between that how the brand love and the equity has to be formed, which is for the long term, and how the money has to be invested for the short term strategy, which is for the driving sales, and ROI is there. So this is it. Yes, it has increased, and what I would like to see more is clients like Rajiv who say that you should continue to advertise. Absolutely. You'll get the last one, okay. No, definitely, Vikram, I think great discussion, and I definitely think it has gone up in terms of consumption, with so many more new brands launching every day and across various platforms. Definitely gone up, and one thing I would want to see is more and more regional brands becoming more national, becoming large, big brands. So you see so many big regional brands today who are becoming such big brands. If they become national brands and become big iconic brands in the country, I think that's what I would want to see going forward. Mr. Dubey gets the last word. Yeah, last word is last word. So, absolutely, it has helped. And more so in digital, because, it has helped newer brands to be launched in e-commerce and in the marketplaces, which was for us, for say companies like consumer products companies like ours, it takes it's a lot of effort to launch a product all India. So a lot of brands are e-commerce first. You go to e-commerce, test it out, and then go to rest of the country. So that's been very easy. So obviously this. What would you like to see more of? I would say like to see more of opportunities to advertise, I would say, in the sense that, opportunities to advertise and better ROI, better measurability. I think that's something been missing. And probably a unified measurement, that's something Excellent. I would like to see. So wonderful, thank you. So I think where we are netting out in this panel is, there's a thumbs up overall that, yes, in the digital age, advertising and media is spurring consumerism. There is a thought that possibly we need to have a good balance of branding and performance. There is this entire piece about we should be always on and try to be spending. Don't take marketing or advertising as a just one campaign thing. You've got to engage with your consumers time and time again. The entire piece about you're actually now being able to get
more advertisers into the fold, so that should be welcomed. And similarly, the regional brands, they have an opportunity to go whole national. And in all of this, if we can start getting some of the ROI piece going, unified measurement piece going, I think it's only sky's the limit for all of us. A big thank you to the entire panel and to you, the audience. Thank you so much. Sky is the limit indeed. Thank you so much for this wonderful session. So we spoke on consumption in the digital age, the role of media and advertising, and how the trends have been shifting in this digital age and the roles played by the media and advertising in the digital consumption. And of course, Swati, when we talk about India's growth, this one's a must to mention to discuss the innovation overdrive in India. Talking about emerging trends and technology in startups, may we please call our esteemed panel on stage for this next discussion, starting with Mr. Anil Singhvi. Sir, please, आप वापस आ जाएं stage पे, and our guests. Mr. Prashant Pitti, co-founder Ease My Trip. Mr. Varun Tangri, founder and chief executive officer Q Buster. Mr. Sameer Agrawal, founder and CEO RevFin. Mr. Bhuvan Rustagi, co-founder and COO Per Annum and Lenbox. It's going to be one wonderful session on innovation overdrive. Over to you, sir. The mic's working? Hello. Working? Check. Yeah, now working. Because when you start a technology-related session, must be updated. Anyway, so guys, सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं इस वक्त जिन्होंने स्टार्टअप्स की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है. कुछ ऐसे आइडियाज़ इनके दिमाग में आए हैं जिसने उन्होंने एक ड्रीम को रियलिटी में बदला है और किस तरह से एक बढ़िया आइडिया बढ़िया बिजनेस में बदल सकता है, इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं. शुरुआत मैं ईज़ माई ट्रिप के साथ करना चाहता हूँ. प्रशांत जी, कई बार वैसे मैंने आपके इंटरव्यू किए हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये कि एक ऐसा बिजनेस जो आम तौर पर लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का रोल कहाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये थॉट प्रोसेस कैसे आना कि टेक्नोलॉजी के सहारे एक हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आप ट्रैवल कंपनी, टिकट कंपनी बना सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे बदला, ये समझे. सर, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आपसे टीवी इंटरव्यूज़ बहुत हुआ है, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर. तो सर, मैं ये ना ईज़ माई ट्रिप से ज़्यादा बताऊँगा कि अगर लोग नया शुरू करना चाहते हैं जी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी, मैं बहुत सारे उद्योगपतियों से मिलता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ, जो कि अपने बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और करना भी चाहिए. देखिए, अगर हम बाहर की रेस खेलेंगे, अगर आप डेवलप नेशन देखेंगे तो डेवलप नेशन कैसे हुए, उन्होंने 200 साल पहले अच्छी रोड्स बना ली, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, और हमारा देश भी अभी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है. जैसे आपने अभी वीके सर के साथ में बात करी, बिल्कुल सही बात है कि पिछले 60-70 सालों में जितनी रोडें बनी थी, हाईवे बनी थी, उतनी अभी लास्ट 10 सालों में भी बन गई है. लेकिन मुझे लगता है हमें ना डिसेंट्रलाइजेशन पे भी फोकस करना चाहिए. एक तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और एक है टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी में भारत हमेशा ही बहुत उम्दा नंबर पे रहा है. हम फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पिछले 20-30 सालों तक लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाते थे. TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये दूसरे देशों के लिए टेक्नोलॉजी बनाती थी. राइट. आज का एंटरप्रेन्योर अपने लिए प्रोडक्ट बना रहा है और दूसरे देशों में वो प्रोडक्ट दे रहा है, और इसकी शुरुआत भी हमारी गवर्नमेंट ने की है. जैसा UPI ले लीजिए आप. अब UPI के जरिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं. तो हमें एक ऐसा गेम खेलना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का गेम खेलना चाहिए जिसमें हम किसी के पीछे नहीं चल रहे हो, उनकी बराबरी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. हम तो नए रूल बना रहे हैं इसके जरिए, हम तो नए ही प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एकदम सही टाइम है हमारे देश के लिए कि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाए और उसके ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए. और मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री के अंदर, मैं कुछ चैम्बर्स का भी पार्ट हूँ जहाँ पे बिजनेसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते रहते हैं,
तो मुझे ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि मैं अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड करूं आज के टाइम में। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि जो 65 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, 75 ईयर ओल्ड लोग हैं, वो भी अपने बिजनेस को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। तो हमने भी एक ऐसी छोटी सी शुरुआत की थी सर, एक ट्रैवल एजेंसी थे। वी वर अमंग 100,000 ट्रैवल एजेंट्स। एक ट्रैवल एजेंट थी, ड्यूक ट्रैवल एजेंसी कंपनी शुरू करी थी। वहाँ से हमें समझ में आ गया कि ट्रैवल एजेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व किया जाए। ऐसे इज़मा ट्रिप की शुरुआत हुई थी आज से 15 साल पहले। तो हमने तो एक सॉफ्टवेयर बनाया था ट्रैवल एजेंट के लिए, 3 साल वो सॉफ्टवेयर रन किया, फिर हमने कहा यार अब तो ट्रैवल एजेंट ही धीरे धीरे और ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हम खुद ही OTA बन गए सर। ऐसे शुरुआत करी थी कंपनी की। ओके, वंडरफुल। वरुण राम, जो मतलब हमारा बचपन तो ऐसे निकला कि एक टास्क होता था, आज तुझे जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आज तेरा काम वाटर बिल भरने का है, मतलब है ना ये सब। मतलब अब सोचते थे कि जिसको पैसा देना है मतलब वो लाइन में लगाया, कायदे से लेने वाला लगना चाहिए। तो आपने जो बनाया कि क्यू बस्टर, कि भाई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये मैं एक समझना चाहता हूँ, लोग कहते हैं स्टार्टअप है, लेकिन ये स्टार्टअप वाला आइडिया कभी भी आ सकता है, 50 साल की उम्र में भी आ सकता है, 15 साल की उम्र में भी, राइट। ये आइडिया कैसे आए ये मुझे समझाइए, आपके दिमाग में कैसे आया? अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आना चाहिए तो क्या क्या देख के मैं लाऊं वो आइडिया? आई थिंक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे को बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो सिर्फ हम तक सीमित नहीं होते हैं, वो एक्चुअली ग्लोबल होते हैं। हमारे में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उस आइडिया को समझें, उसका एक सोल्यूशन सोचें और इम्प्लीमेंट करें। हिंदुस्तान में या ग्लोबली सबके पास आइडियाज़ तो बहुत है, दिन में 5 आते हैं, लेकिन असली चीज़ है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो ये आइडिया हमें कैसे आया? बहुत सिंपल है। आज भी होता है कि जब आप जाते हो किसी भी आउटलेट में, अगर कोई फेस्टिव सीज़न है तो बहुत लाइनें लग जाती हैं, और ऑलमोस्ट 30% ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 30% के करीब सेल लॉस हो जाती है रिटेलर्स की, क्योंकि लाइन देखकर कस्टमर्स जो हैं वो सामान फेंक के चले जाते हैं कि हम नहीं चाहिए, और चाहे वो उन्होंने एक ही आइटम खरीदना हो या 2 आइटम खरीदना हो। तो हिस्टोरिकली 30% ड्रॉप रेट होता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 400-500 बिलियन का रिटेल देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो आइडिया बहुत सिंपल था कि लाइनें नहीं लगने देनी है, तो रिटेलर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो तेज़ हो, जिसमें उसको परेशानी ना आए। मोस्टली लाइनें इसलिए लगती हैं कि सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है या इन्वेंट्री ढूंढने में टाइम लग रहा है, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल था, और अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से आया था कि बहुत टाइम वेस्ट होता है लाइनों में लगने में, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो इजी टू यूज़ हो, सस्ता भी हो, ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, और लाइनें ना लगें, इसलिए नाम क्यू बस्टर है। समीर, मुझे दिन में कम से कम 15-20 फ़ोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो बड़ा मतलब ऐसा फील होता है कि भाई चलो पैसा देने वाले लोग बहुत बैठे हैं। एक ज़माने में ऐसा होता था जिसको पैसा लेना है वो लोगों को फ़ोन करता था, शायद आपके फादर के ज़माने में यह रहा होगा कि जिनको पैसा चाहिए वो फ़ोन करते हैं। अब उल्टा है, पैसा देने वाला। तो ये जो बदलाव आया है इसके पीछे कारण क्या है? एक टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो आपकी कैपिटल है, पैसा, जिससे आप बिजनेस करें। क्या स्टार्टअप स्पेस में कुछ चीज़ें ऐसी बदली है जिससे कि इस तरह के बिजनेस करना आसान है? आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, आपने अच्छा एग्जांपल लिया एक। आई थिंक इसको हमें थोड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो हम लोग जो स्टार्टअप्स बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रही हैं, बहुत इनोवेशन लेके आ रही हैं, उनका कोई एक लार्ज पर्पस होना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक जब इतनी सारी डिफरेंट स्टार्टअप्स बनती हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं और कस्टमर आउटरीच शुरू करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमर को टच करना चाहती हैं जो और कोई टच नहीं कर पा रहा है, राइट। तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों जो जिन कस्टमर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये स्टार्टअप्स उन कस्टमर्स के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, और हर स्टार्टअप कोशिश कर रही है कि एक नया कस्टमर सेगमेंट ढूंढें और उसमें फोकस करें। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए कि इस वजह से जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें लोन मिल सकता है, आज उनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ठीक है, हमें किसी ने फ़ोन किया है तो शायद हमें भी लोन मिल सकता है। और जब वो अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो उनसे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं
डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की वो थोड़ी कम है, और वो भी सारा जो प्रोसेस है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो जाता है। अब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे जो लोग जैसे अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको एक इतना कंफर्ट नहीं आता कि जाके किसी से लाइन में लगें या किसी बैंक मैनेजर से बात करें, बट टेक्नोलॉजी ने वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, आप जाएं या कोई और जाएं, टेक्नोलॉजी के थ्रू एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। एंड साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से एक और चीज़ होती है कि आप बहुत सारी पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो इसलिए लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, तो क्यूज़ ख़त्म हो गए। एंड टेक्नोलॉजी का एक और फ़ायदा ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट मिलता है कि हर वक्त हर बार सेम ट्रीटमेंट मिलता है आपको। तो आई थिंक ये सब सारे स्टार्टअप्स ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एंड मेरे ख्याल से काफ़ी लोग, जिन लोगों को लगता था यार हमारे लिए ये चीज़ें है ही नहीं, लोन हमारे लिए नहीं है, सेविंग्स प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं है, इंश्योरेंस हमारे लिए नहीं है, आज उन सबको एक्सेस मिल रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू और स्टार्टअप्स के थ्रू। भुवन रुस्तगी भी हमारे साथ है, पर एंड लैंडबॉक्स जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप को आपने बनाया। भुवन, स्टार्टअप के बारे में कहा जाता है भाई आइडिया बहुत आते हैं, 10 में से 6 आइडिया तो मरना पक्का है, 1-2 ठीक ठाक जिंदा रह गए तो ठीक है, 1-2 ही चल जाएं तो बड़ी बात है, राइट? दिस इज़ द रेशियो। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप बड़े यंग हैं, आइडिया से एग्जीक्यूशन की जो ये पूरी जर्नी है, इसमें क्या खास लर्निंग्स आपकी रही हैं? सर हमने 2015 में शुरू किया था। हमें आइडिया भी ऐसे ही आया, हम लोग ने शुरू किया P2P लेंडिंग एक बिज़नेस से। बेसिकली लोग एक दूसरे को लोन दे सकें, हमने ऐसे बिज़नेस शुरू किया था, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू। देखिए चांदनी चौक में जाइए, हर जगह जाइए, आप अपने दोस्तों को लोन देते हैं, सब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस है। Correct. एक दूसरे को उधारी देना। हमने कहा इसमें टेक्नोलॉजी आके ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ बॉम्बे वाले को लोन दे दे, और हम मीडिएटर बन जाएं बीच में, टेक्नोलॉजी बन के हम कलेक्शन कर लेंगे, हम ऑर्गेनाइज कर देंगे सब। शुरू वहाँ से हुआ। अब ये आइडिया मेरे को नहीं लगता आइडिया बहुत अलग है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ हमें ये लगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हुई कि इसमें RBI बहुत पहले इन्वॉल्व हो गया, तो रेगुलेट हो गया, तो स्ट्रक्चर हो गया काफ़ी चीज़ें, तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ। लर्निंग ये होती है सर, एक तो मतलब थोड़ा वो है कि गिव अप नहीं करना चाहिए आसानी से। यूजुअली स्टार्टअप की जर्नी में, विच ये लोग भी शायद अग्री करेंगे, हाइज कम होते हैं, लोज ज़्यादा होते हैं, बट वही अगर आपको अपने आइडिया पे भरोसा है कि ये चल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अभी कुछ साल पहले तक एटीट्यूड था इन जनरल, चाहे VCs की वजह से हो या स्टार्टअप्स की वजह से हो, कि ग्रो करने के लिए पैसा बर्न करेंगे, मार्केटिंग में पैसा बर्न करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाएगी। वो मुझे नहीं लगता एज अ सस्टेनेबल मॉडल। ये तो शायद प्रशांत से बेटर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि प्रशांत मेरे ख्याल से जब तक आपकी कंपनी लिस्ट हुई थी उससे पहले काफ़ी न्यू एज कॉमर्स कंपनी की धुलाई हो चुकी थी, मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद सबके दाम आधे रह गए। सो ये एक बड़ा चेंज हुआ है कि टॉप लाइन ठीक है अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप पैसा नहीं दिखाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके लिए बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म तक के लिए सस्टेन करना मुश्किल है। देखिए मेरे हिसाब से ना इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। हमने जो राह पकड़ी ज़रूरी नहीं कि वही सिर्फ सही रहा है। ईज़मार्ट ने आज तक कभी कोई पैसा रेज नहीं किया है, बूटस्ट्रैप रहे हैं, सीधा IPO हो गया है, लेकिन मुझे दिखता है दूसरी साइड भी बहुत वैल्यू है। स्पेशली अगर आप कोई R&D से रिलेटेड काम कर रहे हो, जिसके अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, आप कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग के अंदर, कुछ लॉस भी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिजनेस सिर्फ दो रीज़न के लिए किया जाता है। पहला, टू सर्व योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करनी है, और दूसरा यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉफिटेबिलिटी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको इवेंचुअली तो प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा। तो VC मनी जो है ये बहुत अच्छा पैसा है स्टार्टिंग के टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वरुण, जो प्रशांत कह रहे हैं मान लूँ, या मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मान नहीं पा रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबिलिटी, राइट, या फिर थोड़ी साइज बना लें, हिट्स कितनी है, डाउनलोड्स कितने हैं, इसके बेसिस पे वैल्यूएशन करके किसी को पकड़ के चिपका दें। तो मैं दोनों साइड पे रहा हूँ, मैं बूटस्ट्रैप भी रहा हूँ और मैं
फंडेड भी हूँ, तो हम ऑलमोस्ट 12 साल से कर रहे हैं, जिसमें पहले 10 साल हम बूटस्ट्रैप्ड ही थे। और प्रशांत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप इतना लंबा चलते हैं तो ज़िंदा रहने के लिए पैसे ही कमाने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ही होता है। लेकिन हमको एक लगा कि हमारी जर्नी में वो मोमेंट आ गया कि जहाँ पर एक्सटर्नल कैपिटल अगर हम उठा लेते हैं तो जो विजन या एम हम अचीव करना चाहते हैं उसको 10 गुना जल्दी कर पाएंगे, 10 साल की जगह 1 साल में हो जाएगा। तो कैपिटल उठाने के पीछे अगर रीज़न सही है तो कैपिटल सही है, क्योंकि वो तो बैंक से भी लोन लेते थे पहले। सही लगता है ना, जब आप पैसा ले रहे हो तब तो सही नहीं। इसके अंदर एक रीजन बताऊंगा। ज्यादातर स्टार्टअप्स फाउंडर पैसा लेते भी क्यों हैं? लेते क्यों हैं? इनका रीजन सही था, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स पैसा लेते हैं वैलिडेशन के लिए। ये सही बात है, ये मेरा बेंचमार्क हो गया। वैलिडेशन कि भैया मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मेरी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। और मेरे ख्याल से ये प्री मैच्योर सक्सेस होता है आपका। मैं इसको है ना, एक्चुअली में जो स्टार्टअप्स पैसा उठाते हैं इसको मैं वैल्यूएशन नहीं कहूंगा, इसको मैं डाइल्यूशन ही कहूंगा। आपने एक डाइल्यूट किया है कुछ पैसे लेने के लिए, वैल्यूएशन तो आपको पब्लिक ही देगा। आपका देखिए ईज माई ट्रिप का जो शेयर है इसकी वैल्यू 7 लोगों ने नहीं की है, 7 वीसी ने नहीं की है, 7 करोड़ देशवासियों ने की है। जो मेरा शेयर नहीं भी खरीद रहा वो भी मुझे वैल्यू कर रहा है। इट्स अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ 7 करोड़ पीपल। 7 वीसीज की इंटेलिजेंस नहीं है, 10 वीसीज की इंटेलिजेंस नहीं है। तो अगर स्टार्टअप का पैसा जो उठाया जाता है वो सिर्फ अगर वैलिडेशन के पर्पज से उठाया जा रहा है कि हमारे थोड़ा मीडिया में आ जाएगा नाम, थोड़ा लोग पढ़ लेंगे हमारे बारे में, वो एक सही रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ इससे बहुत तेजी से हो रही है जैसा आपने बताया, तो ये बहुत अच्छा पैसा है। और इसको जज करने का एक वैलिड इसको जज करने का एक पैरामीटर भी है कि कंपनी अगर शुरू हुई 5 महीने ही हुए हैं और सीधा बस वीसी मनी ही चाहिए, तो आई थिंक उन्होंने अभी तक मार्केट टेस्ट नहीं करी है, कुछ भी टेस्ट नहीं किया, तब वो थीसिस जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टेन्योर हो चुका है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपको पता है कि चीज़ें चलती हैं, तब शायद डेट और इक्विटी में से आप कुछ भी उठा सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली आपको सिर्फ पैसा चाहिए अपने आइडिया को और तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वो एक पैरामीटर है कि कितनी जल्दी आप कंपनी की जर्नी में पैसे के लिए भागना शुरू कर रहे हैं एक्सटर्नल कैपिटल के लिए। तो वो एक बेंचमार्क जरूर है। ओके, तो मतलब एटलीस्ट वैलिडेशन और बेंचमार्क के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका वो अंडे से निकले नहीं बटर चिकन बनूंगा वो वाला स्टेट नहीं होना चाहिए कि अभी शुरू भी नहीं किया एंड देन यू आर एमिंग बिग। थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, मार्केट हो जाए, पैसे आना शुरू हो जाए, देन यू शुड। कई बार मैंने देखा है भुवन की जिन कंपनियों के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईटीसी जो काम कर रही है, जितने लंबे समय के जितना प्रॉफिट बना रही है, उसका वो वैल्यूशन नहीं जो किसी नायका का हो जाता है। करेक्ट, खाली इसलिए कि एक उसका वो परसेप्शन है। कभी एज ए स्टार्टअप आपके मन में आता है ये कि भाई मैं इस वैल्यूशन पे बनाकर मुझे कंपनी वहाँ ले जानी है और फिर मैं कुछ नया सोचूंगा? क्योंकि जनरली मैंने देखा है जो स्टार्टअप्स करते हैं वो एक पे नहीं रुकते। अब ये किया, इसको बेचा, अब मैं इसमें से 5 और करूँगा, ये थॉट प्रोसेस क्यों है? सर आई थिंक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, विच इज़ बेसिकली एक तो चैलेंज चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए करने को। तो वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। मैं भी अब 2015 से कर रहा हूँ, वो 12 साल से कर रहे हैं। ईज माई ट्रिप इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड बिजनेस, वी आर ऑल, मतलब हम काफ़ी टाइम से सब कर रहे हैं। बट या तो अपने बिजनेस में आप कुछ नई चीज़ करते रहें, या तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करें या कुछ करें, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हम आफ्टर अ पॉइंट बोर हो जाते हैं। हमने भी 5 साल एक बिज़नेस किया, फिर 5 साल के बाद हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हमने लेंडिंग से हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी घुस गए। हम अब RBI भी रेगुलेटेड है, सेबी रेगुलेटेड भी है, तो चैलेंज भी है बट एक्साइटिंग भी है। अभी हमें लगता है इस स्पेस में बहुत स्कोप है, हम इसी में ही ग्रो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक वो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है इन जनरल, इन मोस्ट केसेस। अब आप आईटीसी की अपने आईटीसी का एग्जांपल लिया, उन्होंने वो क्या क्या नहीं करते, होटल बनाते हैं, सिगरेट बेचते हैं, खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट, सब कुछ है उनके पास, राइट। तो अगर कोई, अब तो चलो इट्स लिस्टेड कंपनी ऑर्गेनाइज है तो बात अलग है, बट अगर कोई 1-2 लोग ही होते, वो ये नई चीज़ इसलिए शुरू करते क्योंकि उनको एक्साइटिंग लगता। कॉन्ग्लोमरेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था ना, कि एक चीज़ कर ली, अब ये इतनी बड़ी हो गई कि ये ऑटो पायलट पे चल रही है, अब कुछ नया करते हैं। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट हज़ारों सालों से चेंज नहीं हुआ है, बस अब ये है कि स्टार्टअप्स और इसकी वजह से फास्ट ज़्यादा हो गया है, लेकिन टाइम लगता था। सर देखिए, ये पॉइंट ठीक है कि आपका एंटरप्रेन्योर माइंड है, मैं 4 चीज़ें करूँगा, 4 बिजनेस करूँगा, लेकिन एक 4 चीज़ें कोई आईटीसी करती है और एक 4 चीज़ें कोई भुवन करते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। वहाँ साइज़ है, स्केल है, प्रोफेशनल्स है। अगर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर
कहीं डाइवर्ट होता है, कुछ दूसरे बिजनेस करता है, तो क्या उसके पास में उतनी बैंडविड्थ है, या कहीं वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या दोनों कर सकता है टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी को लेकर? इज इट पॉसिबल? देखिए, मैं ऐसे बोलूँगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं और अगर आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करें तो वो हो नहीं पाती। एंड आई थिंक जब मेरा जर्नी भी ये रहा है, शायद बाकी लोगों का भी ये रहा है, जब स्टार्ट करते लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप कोशिश भी करते हो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप एक डिफरेंट जर्नी शुरू करते हो जहाँ पे आप एक चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ, ये मेरा हीरो बिजनेस है, मैं इसको स्केल करता हूँ, और फिर आप उसको स्केल करना शुरू करते हैं उस पर फोकस करके, और उसमें कुछ साल लग जाते हैं जब आप उसमें स्केल करना शुरू करते हैं उस बिज़नेस को। लेकिन जैसे भुवन ने भी कहा कि कुछ सालों के बाद एक तो आप वो बिज़नेस करते हो थक जाते हो बिकॉज बहुत इंटेंस होता है, दूसरा आप थोड़ा बोर हो जाते हो, एंड तीसरा जब आपको लगता है कि अब ये बिज़नेस उस लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे हम इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टीम डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं, और जहाँ पे अपना कोई नया कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता, उस स्टेज पे आई थिंक सारे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि हम कुछ नया शुरू करें, बट आई थिंक साथ साथ नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ता है। मैं कुछ प्रशांत एक एक्सेप्शन जरूर है, इसमें 6 कंपनी चलाते हैं। सर मेरा थोड़ा सा इसके अंदर थॉट प्रोसेस आपसे डिफर करेगा। मुझे नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योर एक कंपनी के बाद में दूसरी कंपनी जो चलाता है उसका रीज़न ये होता है कि मुझे पुरानी वाली कंपनी में भरोसा कम है, या फिर मुझे कुछ और नया करना है। मुझे लगता है हम हैं भटकती आत्माएं, हम कभी शांत बैठ ही नहीं सकते, हमें प्रॉब्लम दिखती है सॉल्व करने का मन करता है। मैं तो अपने लिए यही सोचता हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो मन करेगा इसे सॉल्व करूँ, उससे इकोनॉमिक वैल्यू मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है। इस लाइफ स्पैन के अंदर अगर मुझे कोई एक अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है जो मुझे लगता है कि मैं सॉल्व करने की काबिलियत रखता हूँ, तो मुझे वो सॉल्व करने में मज़ा आता है। मैं तो ये अपना पर्सपेक्टिव समझता हूँ, इस वजह से मैं पूछता हूँ। और एक मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया हुआ है, जब आपका कैश का, जैसे आपने बताया आईटीसी है, उसके पास में कैश का हुआ है, सिगरेट की कंपनी है, खूब पैसा बनाता है। अगर आपके पास में कोई ऐसी कंपनी बन जाती है, हमारे पास में ईज़मा ट्रिप ऐसी कैश काउ है, अगर आपके पास में ऐसी कोई कैश काउ बन जाती है, और मैथमेटिकल फॉर्मूला मेरा है कि उसका 37%, अगर आप प्रॉफिट उसके प्रॉफिट का 37% से आप ऐसी मैनेजमेंट को हायर कर सकते हो जो आपसे ज़्यादा कैबिलियत रखता है और आपको रिप्लेस कर सकता है। 37.7% एक बहुत ब्यूटीफुल कैलकुलस से फॉर्मूला बन के निकलता है। ओके। कि उस, जैसे हमारा अभी लास्ट 140 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसका 37.7% तक का मैं मैनेजमेंट बाय कर सकता हूं अपना टाइम फ्री करने के लिए, तो करना चाहिए। ओके। अगर आप 10 करोड़ के प्रॉफिट पे हो, उससे आपका निकल के आता है 3 करोड़ 70 लाख रुपए। 3 करोड़ 70 लाख के अंदर अगर आप वैसी मैनेजमेंट नहीं हायर कर सकते हो जो आपको रिप्लेस कर दे, तो आपको उसी काम में लगे रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप सारे यंगस्टर्स और इतने बढ़िया, मतलब मुझे लगता है कि मैं स्टार्टअप से घंटों भर बात कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पक्की है, थोड़ा समय कम है, सब लोगों को डिनर भी करना है, तो नहीं तो मन में क्या क्या सोच रहे होंगे पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ प्रशांत, आज तक मैंने जितने इंटरव्यू आपके किए हैं, मैंने मशीन में देख के आपको सवाल पूछे हैं, आपने मशीन में देख के जवाब दिए। जो मज़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय जो आमने सामने बिल्कुल। तो आज के शो में आज के इस पैनल डिस्कशन में एक खास बात तो ये पता चली कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप्स भी मतलब वाकई में जिंदा दिल बहुत होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और इस मंच की खास बात ही यही है कि हुज़ हू ऑफ इंडस्ट्री अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद रहे। वंडरफुल सेशन। Well, we can get started with the next act, of course. But before that, we'd like to call Miss Mona Jain on stage. Ma'am, please. Chief Revenue Officer, Zee Media Corporation. Ma'am, please come and please say a few words. So सबको मज़ा आया. The last note actually was there as part of the session. So I think a big round of applause for each and every panelist, all the participants, all the people staying back. So thank you very much to everybody. So as we draw the curtains on this extraordinary enclave InSight, I stand here completely overwhelmed. It's absolutely a full house. It's very, very overwhelming to see that. With gratitude for the resounding success we have achieved together.
So this unique initiative brought by the collaborative efforts of WION-Zee Business, this was the first one that we did this year. We hope to do that many, many more as we go along, has truly set a benchmark in the realm of insightful discourse and industry foresight. A very heartfelt thank you to our esteemed guest of honor, General V.K. Singh, for gracing us with his presence and sharing his valuable perspectives. Your address was truly inspiring. And our sincere gratitude to the esteemed speakers who grace our stage with their wisdom and expertise, from changing investment trends from Mr. D.P. Singh to the illuminating keynotes by the market leaders. Each session was a testament to the wealth of knowledge and experience present here today. And very, very thank you to the dynamic duo of Mr. Vikram Chandra and Mr. Anil Singhvi ji. I think you guys are really awesome, you know. And the great camaraderie one could see very, very clearly on the stage to the one that you shared, you know, off the stage. So thank you very much for being here. You know, and I think everybody kind of enjoyed all your sessions that you had with your panelists. And a very, very special mention, obviously, to our sponsors whose support made this event very possible. And your commitment to fostering meaningful dialogue and innovation is truly commendable. I would probably want to give a special thank you to our agency panel. I think we had the key CEOs of various big agencies coming and discussing, talking about digital, how that's becoming a significant option. So thank you very much to all of them there. Vikram, Naveen, Santosh, Rajiv, our client, you know, and am I missing somebody? Okay. And as we move forward, let's carry the spirit of collaboration and enlightenment that defined this conclave, fostering innovation and progress in all our endeavors. Thank you once again to everyone, and there's to a future filled with continued growth and success to all of us. Thank you very much, and have a good evening. Thank you, ma'am. ये शाम अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल एक्ट आप सभी के लिए अभी है और वो क्या स्पेशल एक्ट है? Well, ladies and gentlemen, our next performer is one of India's top stand-up comedians, and you must